1 minute. 30 seconds. 20 seconds. Got it. Yeah, got it. Anji, we are live now. We are live, Ji. Richa ji, we are live. Good afternoon, everyone. On the behalf of IAP West Delhi, I want to welcome you all the delegates, our esteemed faculty, to this workshop on interpretation of complete blood count, which is being organized by IAP Delhi in collaboration with IAP West Delhi. I now invite Dr. Gaba, sir, President IAP West Delhi, to please say a few words. Hello, good afternoon, everybody. Welcome to all. This is the second meeting of second workshop in this year, and the idea is the innovation of Dr. Deepak Gautam, President Sir, and Dr. Pancytopenia, Secretary. It's a nice idea of bringing technology to your doorstep. And to start with, we have the workshop on CBC, interpretation of CBC. It's a basic test and gives lot of information. You will know Dr. Anupam Sachdev and Dr. Manas Kalra sir. Both are researchers from Sargangam Hospital, Division of Oncohematology. And they are great personalities. And I invite Dr. Pankaj Garg to say a few words and start the proceedings of the workshop. Thank you, sir. And good afternoon, everybody. So, as Dr. Gaba is saying that not standing between the presentation and you, the idea for the whole year is technical skills at your doorstep. And just to update that we had our first such meeting 2 weeks back at Dr. Gordon Hospital, in which quick developmental screening tools were done in a workshop model. Similarly, next week we are having with East Delhi otoscopy workshop here, and then in South Delhi also otoscopy workshop, and subsequently we have lined up genetic test workshop, EEG workshop, ECG workshops, so that we can rather than having didactic lectures, we can really get into things and start doing things by our own. With these, I wish all these workshops are as successful as this workshop is. I'm sure a lot of people are already here, and Dr. Richa was saying that people, there were more than 35 who initially registered. So all the best, and we'll continue doing this. And Thank you, Pankaj. Richa. and to do EG workshop. Thank you, Dr. Pankaj. I request Dr. Deepak Gautam, sir, President IAP Delhi, to please come and welcome Dr. Anupam Sachdev, sir. Thank you, sir. We are honored and privileged to have. Is a pioneer and mentor in the Department of Hemato-Oncology. Sir is the Director of Hemato-Oncology Department. He's the recipient जैसा of भी DC डॉक्टर गाबा ने बताया, ये हमारी सेकंड वर्कशॉप है। पहली वर्कशॉप जयपुर गोल्डन में हुई थी, पंकज ने बताया बहुत सक्सेसफुल वर्कशॉप हुई थी। इस वर्कशॉप में हमने कंडीशन रखी है कि हम सिर्फ 25 डेलीगेट्स को रजिस्टर करते हैं, उसमें भी 35 थे, और ये वर्कशॉप तो सर की प्रेजेंस से ही सक्सेसफुल हुई। Until the last moment, even 1 hour back, I was getting calls to get registered. Thank you, Dr. Deepak. I request Dr. Pankaj to please welcome Dr. Manas Kalra. Sir is a very dynamic and a versatile hemato-oncologist who has got maximum publications to his name in the international and national journals. I welcome Dr. Manas Kalra, sir. तो हमारी लाइव ब्रांड है डॉक्टर मानस। I now request Dr. Uttam Pal, sir, to please come and hand over a bouquet to Dr. Deepak Gautam, sir. I request Dr. Lalit, past President IAP Delhi, to please felicitate Dr. Pankaj Garg, Secretary IAP Delhi. I request Dr. Vineet Sehgal, sir, to please come and hand over this bouquet to Dr. Baba, sir.
I request Dr. Gaba sir to please hand over the bouquet to Dr. Alok Bhandari sir, Joint Secretary License at IAP, Class 25 West Delhi, and a guide and mentor to me. I now request our faculty and our faculty members and our Sir Dr. Deepak and Dr. Pankaj please proceed for the lab lighting. Dr. Anupam sir, Dr. Alok Bhandari sir, Dr. Smita Mishra ma'am, or Dr. Uttam Pal sir, please, Dr. Lalit sir, please come for the lab lighting. Dr. Piyush Khanna sir. All the EB members of IAP West Delhi, Dr. Shravan Gupta sir, please. I request you to please be there. Dr. Ripdaman ma'am. आज कोई बहुत रिलैक्स लग रहा है पिछले साल के स्ट्रेस के बाद Dr. Rashmi हैप्पी एंड रिलैक्स Dr. Dinesh Goel sir. प्रैक्टिस छोड़ जाएगी हेलो छोड़ जाएगी प्रैक्टिस नहीं छोड़ने देंगे डॉक्टर मानस एवरीबॉडी इज देयर आई एम डॉक्टर नीचे तो फोटो दे हाथ में जलवा दे हो गया We have been reading CBCs in our day-to-day practice every day, but still this topic is very intriguing. And I think we can gain enormous information by just reading a CBC and come to a right diagnosis. It's like a treasure. The more you dig in, the more you get. And we are fortunate enough that we have an esteemed faculty of Dr. Anupam Sajdev sir and Dr. Manas Kalra to enlighten us more on the interpretation of CBC. Over to Dr. Pankaj sir. This is the first and the second slide. No, sir, we don't want the next slide to come now because there will be answers on the. तो विपुल को बोलो ना वो निकाल देगा. Slide changer, वो है ना slide changer. So the plan of the day is that in first 25 minutes, Dr. Manas will be presenting the interpretation in a more theoretical, the lecture form, and then he has prepared 25 CBC and the hemoglobin electrophoresis reports, so which will be shared to all of you, and then once one of you will be asked to interpret it, and then others will give their inputs, and then we'll see what we want you to see. Right, so that is the plan. So we'll first start with the lecture.
इससे हो नहीं रही। हाँ हो रही है, इसी से ही हो रही है। Very good afternoon to all of you. So we'll be starting the session today. So the plan, as told by Dr. Pankaj, is initially a theoretical lecture on. Initially a theoretical lecture. Then we have got CBCs for you. We'll distribute the CBCs to everyone. We have got around 25-30 copies with us. So you will have every CBC in your hand. We'll project that on the screen as well. So it will be at both places. You'll have like 3-4 minutes to look at the CBC, interpret it, and one by one we can ask everyone to give comments on the CBC. After CBCs, we have got HPLCs. We have got 15-16 HPLCs to interpret, and we'll be doing that. Sir is here. Sir will be giving comments, and whenever sir wants, he can take over and do the presentation. So we all know that CBC is something which is very basic, an important part of our lives, and it is deceptively a simple test, and a lot can be interpreted from just a simple CBC test that we sometimes just ask routinely and not even pay 1 minute of attention to read the report and interpret it. So, it is all about paying attention, and it is all about correlating it with the clinical scenario of the patient. The astute clinician may use nuances and clues from the CBCs as a guide for further investigation, because just ordering one CBC may not get you the full diagnosis, but it is probably a trigger to make the correct diagnosis. So the components of CBC are all these. You all are familiar with that. Every CBC report has got all these values easily available. But there are some measured parameters and some calculated parameters. So the Coulter machine measures the hemoglobin, MCV, RBC count, and then derives MCH, MCHC hematocrit from the value that the Coulter has got. So these are the formulas. It is available everywhere. If you want to jot it down, you can jot it down. Otherwise, these are simple formulas of how MCHC, MCV, or MCH is calculated from the CBC value in the machine. So we know about the erythrocyte shape, the size, and I'll not go into details of that. We know that the erythrocyte lifespan is around 120 days, and it just keeps turning over. And what is perfectly normal in a young child is often mistaken as abnormal. So pediatricians have a double role, because for all the values that you get in the CBC report, they will give you a reference range, but that reference range is for adults. So that doesn't help us. We have to know what is right for children and then interpret the CBC appropriately. So, I'll just show you this. So if we look at, these are the CBC, hemoglobin, hematocrit, MCV, MCHC, retic, WBC, and platelet count. So things keep changing with time. So you see that for a term newborn, 16.5 hemoglobin is okay, whereas 13.5 is somewhat, a normal hemoglobin for a 6-year-old child. So retic count of 3 to 7% for a normal newborn is okay. But as the child grows, the retic count actually goes down. So look at the hemoglobin at 2 months. It is 11. So, you are developing a physiological anemia, and this hemoglobin goes down, down, down. Sometimes you have iron deficiency and it goes further down. Look at the MCV value. So at birth, your MCV is 108. But as you grow up, your MCV is 83, 84, 86. So, the MCV is becoming down. So this is just physiology. There is no pathology in this. So once you don't know the physiology, you will not know what the pathology is. And, similar way, the retic count 0.5 to 1% for older children, whereas 3 to 7% for, younger children. So look at the MCV value, from 108 to 76, and then goes back again to 86. That's again, physiology of the cell becoming smaller and then going back to its normal shape. Look at the lymphocyte count. So when you are young,
lymphocytosis, relative lymphocytosis is normal. So we don't worry about that. Whereas if you have an older child with a 70% lymphocyte, you might worry as to why lymphocytes are so many in this child. So, again, this is a part of physiology. And I can share these photographs and the range. We have got a nice chart for the range, and I can put that in the group for everybody's reference. And, you can always have that in your clinic to understand what is normal, what is abnormal. Now, we are just going to touch very briefly on the topics that we are going to discuss, and we are not going to do details because this is a practical workshop and we want to give you more and more information as you are reading the CBC in your hand. So WHO classification of anemia is there and it is readily available everywhere. So anyone, you might think, oh, 11.5 hai, hemoglobin to theek hai, but that may not be okay as per the WHO standard. So, that might qualify for mild anemia for a particular age group. So look at a non-pregnant woman or 15 years of age and above girls. 12 or higher is called non-anemia. So if the patient has 11 or if your index person has 11, there is some form of anemia in that, whether it is iron, whether it is, just menstrual losses or whether it is megaloblastic, we need to evaluate that because why should anybody live with anemia? And this kind of tells you that sometimes we have this acceptance attitude that, oh, 11 so that's fine, 10 so it's fine. It is not fine. There is some problem with that. Even if it's a child trait, we need to say to the family that, okay, it is 10. There is no iron deficiency. 10 is fine because the patient has thalassemia trait. Now, when we classify anemia, we need to look at two things, MCV and RDW. These are very important. And when you see the CBCs, please try to tune your mind to look at MCV, RDW, and that will help you classify the anemia. And I'll show you how that happens. Now, MCV, whenever you see MCV in the report, it is one of the most important RBC indices. There are ways to calculate the MCV on the bedside. So you may not have the chart with you. So you can simply use this formula, 70 plus age, and that gives you the lower limit of the MCV. If you want to look at the higher limit of the MCV, 84 plus 0.6 times the age, the year. So suppose you have a 5-year-old child, the lower limit of MCV would be 75, and the higher limit would be 84 plus 0.6 into 5. So that will be 0.6 into 5 is 3. So 84 plus 3 is 87. So that will be like the higher limit of the MCV. So it's a very simple method, and usually for adults, above 95, 96 is kind of taken as macrocytosis. Now, this formula is usually valid from 2 to 10 years of age, where the most of our patients die in that age group. This is a typical picture of microcytic hypochromic anemia. You can see that the RBC looks very pale from the middle. You can see that most of it is actually central pallor. The cells are smaller than the lymphocytes. So this is microcytic and hypochromic, both pictures, and most common cause for that is iron deficiency. Then this term will keep coming again and again, RDW. What is RDW? RDW is red cell distribution width. So if you have many cells who are of different sizes, so some are small and some are large, then the RDW will be high. If you have cells of uniform sizes, the RDW will be normal. Normal RDW is between 11 to 14 CV units. If you have high RDW, that means there is a lot of anisocytosis. So you heard the term microcytosis when the MCV is low, hypochromia you saw when the coloration inside the RBC is less, and anisocytosis is something that you frequently read in your CBC reports, and that is when your RDW is high. That means you have a lot of cells of different shapes, different sizes. Okay, so you can see this. This is the central part is the MCV, and if the cells are very small and very large, you will have a high RDW in this patient. It measures the dispersion of the red cell size. Now, this is the normal value, and when we talk of high RDW, usually it is nutritional anemias. Common cause for high RDW is nutritional anemias like iron deficiency, B12, and folic acid. It can also be high in hemolytic anemias like thalassemia major.
Thalassemia major has a dirty slide. The cells are all over the place. So the RDW is high. Iron deficiency high. So please correlate these values when you see the CBCs, then they will give you the CBCs in your hand. It's usually normal in thalassemia minor. So if you have a pure thalassemia minor, your RDW is going to be normal, your MCV is going to be low, and your RBC count will be high. I'll come to that. So the next thing is the RBC count that will come in your CBCs, and it is very important. Often we don't pay attention to it because we have looked at the hemoglobin, so we know what is the degree of anemia. Now your RBC count should correlate with the degree of anemia. So if you have, say, RBC count of 3, usually the hemoglobin is 9 and the hematocrit is 27. So this is the rule of 3. RBC count multiplied by 3 gives hemoglobin. Hemoglobin multiplied by 3 gives hematocrit. Now suppose you have a hemoglobin of 10, but your RBC count is 5.2 million. What does this mean? Your MCV is low, your RBC count is 5.2 million, and your hemoglobin is 10. What do you think this is? This is usually thalassemia minor. Why? Because in thalassemia minor, you will have microcytosis. और क्योंकि वो hemolytic anemia का एक तरीके का form है, तो there is lot of RBC production, but your hemoglobin is still low because there is a thalassemia condition. Okay, so your MCV will be low, your hemoglobin will be low, but your RBC count will be disproportionately higher. This is typical of thalassemia minor. So rule of 3 is very important, and it usually helps us to look at the CBC and say कि हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी की पिक्चर हो, बट इसका आरबीसी काउंट क्यों बढ़ा हुआ है ना? So normally in iron deficiency, what will happen? MCV will be low, RBC count will be low, hemoglobin will be low. So everything goes together. But when your RBC count goes against the MCV and the hemoglobin, that is the time you should think of thalassemia minor in a relatively mild anemia case. Okay, so we'll show you cases for that, and then you will be able to pick that. Mentzer Index is something which is useful. We use the CBC report to calculate Mentzer Index. So what is Mentzer Index? Mentzer Index is MCV divided by RBC count. So अब आप फिर खुद ही सोचिए कि you have a patient with iron deficiency. Okay, तो MCV कम होगा, RBC count भी कम होगा, दोनों चीजें कम है, तो आपका Mentzer Index हाई होगा. तो हमने एग्जांपल लिया कि भाई कोई बच्चा है, उसका MCV 60, okay, and your RBC count is 3.5 million. तो आपने 60 को 3.5 से डिवाइड किया, your Mentzer Index will show you that the Mentzer Index is more than 30. So that means it is iron deficiency. Now, if you have thal minor, suppose his RBC count was 6 million, so बहुत high है और MCV बहुत कम है. So you divide these two values, you will get low Mentzer Index, which will point towards thalassemia minor. Please remember, this Mentzer Index has to be used only for cases of mild anemia, not for severe anemias. Only when you have mild anemia, you can use Mentzer Index to kind of think whether this patient has thalassemia minor or not. Then newer parameters are coming in practice, and one of the important newer parameter is reticulocyte hemoglobin. So what are reticulocytes? Reticulocytes are the young RBCs. In young RBCs में hemoglobin concentration कितना है? This is called RET-HG, and reticulocyte hemoglobin is a parameter of functional iron that is available, and it is a newer parameter. It kind of picks whether the patient had a functional iron deficiency in the recent few days. Many new machines are giving this value, and actually it is, you know, one of the most sensitive markers to pick iron deficiency. Conventionally, we use all the ferritin, serum iron, TIBC, and all those parameters for iron deficiency. Reticulocyte hemoglobin is a new parameter which is now being used. The value comes from 28 to 35. If you are less than 25, it indicates that there is iron deficiency.
So these are all the causes of microcytic anemias. You know, iron deficiency.
aplastic anemia or inherited bone marrow failure syndromes, they again present with macrocytosis. Diamond-Blackfan anemia has macrocytosis. And these are the common entities which can present with macrocytosis. Liver disease anemia also can be macrocytosis. Now, just 2 minutes about retic count. Retic is a very, very important part of our hematological analysis. So what is retic? Retic is an immature RBC. If you have too much destruction of normal RBCs going on, the body will try to produce more and more red cells. And these red cells will come out, and these are the reticulocytes. So if you have sudden blood loss, or if you have hemolysis going on, and your bone marrow is good, they will produce a lot of retic. Now, if your bone marrow is weak, suppose you have aplastic anemia, or you have Diamond-Blackfan anemia, things like that, which are mainly inherent problems of the bone marrow, the bone marrow will not be able to produce retic. So a retic response is a normal response to any degree of anemia. And this kind of helps to differentiate between a bone marrow pathology and a not bone marrow pathology. So if you have a hemolytic anemia, जैसे Thalassemia हो गया मान लीजिए, hereditary spherocytosis हो गया, we never do a bone marrow test in there. We can make diagnosis by peripheral blood, HPLC, osmotic fragility, G6PD test. All this picks the diagnosis of hemolytic anemia. Rarely we have to do a bone marrow test. One disorder is congenital dyserythropoietic anemia, which is type of a hemolytic anemia where we have to do a bone marrow to prove it. But otherwise, all hemolytic anemias, we never have to do bone marrow, and retic is often helpful. So you have to understand that this retic, sometimes the report retic is not released just with a CBC. So when you are evaluating a child for hematological problem, when you ask for CBC peripheral smear, if anemia is an issue, ask for a retic count as well, because it is done by supravital staining. In normal CBCs, the cells are killed, they are dead, they are fixed with alcohol, whereas retics are not fixed, they are dyed with supravital staining, and they are alive because of the different type of stain present in them. They have higher MCV. So if somebody has a lot of retic coming out, the MCV may be a little higher. And this is reported as they are kind of have a bluish hue to it, and that is why they are reported as polychromatophilia. So if somebody says in peripheral sphere polychromatophilia present, that means retics are being produced in a big number. So very, very important that you know what retic is, how retics look like, and very important to calculate corrected retic count. So this formula is very, very important, and we all should know that, because just a value of retic is not enough. You have to calculate retic for that anemia. Simple सा मतलब है, अगर आपके पास anemia है patient में, तो retic high होना चाहिए. अब क्या वो retic proportionately उस degree of anemia के लिए हुआ या नहीं हुआ, that tells you the status of bone marrow. So I'll give you an example for that. So retic is corrected retic is retic into hematocrit divided by expected hematocrit. So I'll show you an example. So a 6-month-old child is there. His hemoglobin is 3. So severe anemia है इस बच्चे को. Now your retic is 1%. So आप अगर retic की value देखो तो क्या है? 0.5 to 1%. So it looks like normal. तो आप कहोगे जी retic बिल्कुल normal है, ठीक है. But क्या 3 degree hemoglobin के लिए 1% retic ठीक है? No, it says that the bone marrow is not working. How do you prove that? By calculating corrected retic count. So the patient's hematocrit is 10. ये आपके CBC में आया हुआ है. The hematocrit is 10. And the expected hematocrit क्या होगा? समझ लीजिए hemoglobin अगर हम 12 माने, तो 12 3s are 36. So expected 36 है, और value आपकी 10 है. Now you calculate. So your corrected retic count comes as 0.28%. So it tells you that your retics are not enough. So don't go by the value. So in our hospital, when we ask for retic, we get
reticulocyte count, corrected reticulocyte count, reticulocyte hemoglobin, and all parameters of retic are available in one report. But that is, that luxury is not available everywhere. So an ordinary lab would just give you a CBC. If you ask, they will give you a retic count. You will have to calculate the corrected retic count to see whether the bone. So in this case, so a 6-month-old child whose bone marrow is not working and the retic count is so low, that means this is not hemolytic anemia. This is not a normal, some kind of a G6PD deficiency or a thalassemia, something like that. This means that the bone marrow is failing in this child. So we need to do a bone marrow test to identify the etiology of this anemia. Okay, so I skipped reticulocyte production index that is available in Nelson and other books, but that is also an advanced way to look at how the retics are being produced. So after your RBC, so we said RBC, MCV, RDW, we looked at retic and basic macrocytic, microcytic anemias. We need to look at very briefly about WBC, and that will mainly come from the cases. But these are all the cells that are present in WBC based on their structure, based on their sizes. The CBC makes graphs and sends out the graphs which tells you whether the lymphocytes are more or whether neutrophils are more, and you can calculate them by their absolute percentage. So ANC is very, very important. Absolute neutrophil count is very important. In fact, that is the most important cell predicting a serious illness in a child with hematological disease. So you have a child whose TLC is 6,000. आपने 6,000 देख लिया, आपने कहा ठीक है जी प्लेटलेट 2 लाख है, ठीक है जी हीमोग्लोबिन 10 है, कुछ नहीं होता. बट आपने न्यूट्रोफिल को इग्नोर कर दिया अगर, that is a serious issue. Because absolute neutrophil count or neutrophil percentage for that TLC is the most important predictor कि भाई कोई serious illness तो नहीं है, because leukemia, aplastic anemia और ये serious bone marrow disorders में ANC कम हो जाएगा. Why? Because lymphocytes वगैरह तो thymus और इन सब organ से mature होके आते हैं, but bone marrow से पैदा होने वाला cell कौन सा है? Neutrophil. So again it tells you that ANC is very, very important. So always an absence of blast in the smear does not rule out leukemia. So if you have a severe neutropenia in a patient, even if there are no blasts, और आपको लग रहा है यार ये बच्चे को क्या बीमारी है, बुखार क्यों ठीक नहीं हो रहा, ये न्यूट्रोपीनिया क्यों है, you have to do a bone marrow because हो सकता है that the bone marrow is full of blasts and the neutrophils are not able to come out and the leukemic cells are still not come out. So always look at the neutrophil count. कई बार आपके CBC में लिखा होता है shift to left. What is shift to left? Shift to left is just basically a lot of immature cells coming out because of some stress or infection. Persistent inflammation results in release of less mature forms, and that is what shift to left is. So shift to left मतलब जो mature neutrophil है, उसके इस तरफ वाले जितने भी cells हैं, they are all immature cells and they come out whenever there is stress or infection. Okay? So कभी-कभी क्या होता है ल्यूकेमॉइड रिएक्शन, आपके पास बहुत ही हाई वाइट सेल काउंट आ गया और आपको लगा जी ये कैंसर तो नहीं है, बट अगर ज्यादा न्यूट्रोफिल्स ही उसके अंदर हैं तो ऑफन दैट इज अ ल्यूकेमॉइड रिएक्शन. तो आपके पास बिकॉज़ यू आर मैनेजिंग सिक चिल्ड्रन, you are managing sepsis, you are managing neonatal infections, all the time you are having patients with severe infections coming to you. If there is a lot of neutrophilic predominance in the CBC, often that high white cell count is associated with some kind of an infection or sepsis, and there are ways to look at that. And then the last but very important cell is a platelet. So often हमारे पास क्या होता है, patient आता है कि इसको thrombocytopenia है, हम टेस्ट करते हैं और हम कहते हैं नहीं जी इसका तो प्लेटलेट ठीक है. वो क्यों होता है? बिकॉज प्लेटलेट क्लम्प्स फॉर्म कर लेते हैं. सो प्लेटलेट्स हैव दिस हैबिट ऑफ फॉर्मिंग क्लम्प्स. तो आपके पास कभी भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रिपोर्ट में आए, प्लीज गो बैक and if the child is not bleeding, no bruises, nothing, go back and check the platelet count because sometimes clumps are formed and that leads to pseudo thrombocytopenia. So make sure that it is a genuine thrombocytopenia. If there are a lot of bruises, then okay, then this platelet count corroborates. But if you are just suddenly see a CBC for some other reason you have asked and you find that the platelet is 10,000, go back. If you find even one clump
in one examination, that means your platelet is somewhere around more than a lakh. So that is reassuring. Commonest disorder is ITP. ITP may doing a bone marrow is not a must. So just a good CBC peripheral smear fix the diagnosis of ITP. You have to examine the patient properly, make sure there is no hepatosplenomegaly, make sure there is no bone pain, make sure there is no lymphadenopathy, and there is no fever story going on. The child is otherwise well, playing, happy, healthy, then most likely your diagnosis is ITP. So just a CBC fix that diagnosis, and we'll show you cases for that. So a good lab hematologist, just by the basis of CBC, will tell you and rule out pseudothrombocytopenia, have a high index of suspicion for acute leukemia. So this is a new tool. Again, we like this very much. This is called IPF, immature platelet fraction. So like retics, आपका RBC टूट रहे हैं तो बॉडी में रेटिक ज्यादा बन, ऐसे ही अगर प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो आपका बॉडी इमेच्योर प्लेटलेट ज्यादा बना. So your lot of a very high IPF means that the body is destroying the platelets and you are trying to produce a lot of immature platelets. So we do it routinely for our thrombocytopenia patients. If you have a classical finding with high IPF, bone marrow करने का role और कम होता जा रहा है, because this again further strengthens your diagnosis of ITP in our patients. Thrombocytosis, in the times of Kawasaki disease, we have seen a lot of thrombocytosis. So that is again one parameter which picks some kind of an illness when we are looking at the CBC. Sorry, another area where IPF is of great help is when you get a patient of dengue. If you get a patient of dengue who's got very high IPF, unlikely that the patient will bleed. These high IPF patients are basically, platelets are basically young platelets. So they have a better ability to tackle any bleeding. So people have used that also as a measure to reduce the platelet transfusions in a patient of dengue or even for that matter IPP. So a lot of studies also have been done on this important subject of IPF and dengue. Okay, so these are all the newer CBC parameters. I'm not going to go into detail of that. I've told you about RET-HE. I've told you about IPF. One more I will mention is fragmented red cells, FRC. So, you must have heard of terms like HUS, TTP, जिनमें cells break down हो रहे हैं, टूट रहे हैं, schistocytes are present. So the newer filters are able to pick this FRC also and tell you that you have fragmented red cells present, and that also points towards a diagnosis even before you have investigated the patient in detail. And I'll share some very interesting cases that we have recently seen and used FRC to make the diagnosis. So this is just a basic background of basic CBC parameters, just to kind of give you an orientation. And I would just ask sir to give his comments, and then maybe we can move on to the case. So we'll move on to, yes. Yeah. So it does not indicate a bone marrow failure. So it indicates that maybe platelet destruction is not the real mechanism of this thing. Yeah. So it is either, usually it's normal or it is very high. So we don't really worry about too much low IPF. But yes, definitely we keep an eye. We look at the WBC, we look at the neutrophils, we look at the hemoglobin. Because isolated platelet failure from bone marrow is a rare disorder called congenital amegakaryocytic thrombocytopenia, where bone marrow doesn't produce platelet at all. Otherwise, IPF is usually high in ITP, and in aplastic anemia and other conditions, it may be on the lower side. Can I just comment? How do we calculate IPF? It is the number of large platelets which is taken as the IPF. Okay, the larger the platelets, and we'll show you some graphs also which will have
the graphic representation of the platelets. But one thing which comes out of your question is that if ITP में platelet volume बड़ा होता है because there are a lot of large platelets, then there are certain conditions where there is thrombocytopenia with low mean platelet volume. And that is seen classically but they are also treated as ITP. A lot of those patients are treated as ITP. But the classical thing which we see is Viscott Eldridge, in which you have eczema, you have low MPV, you have low platelet count. It's a immunodeficiency disorder. We end up giving plenty of steroids to these patients and muck up the whole thing. So the purpose of MPV, now I'm not talking of IPF, mean platelet volume is another parameter which is akin to IPF. That is the way you can help patient in diagnosis. If the MPV is below 7 or 6, then it is indicative of a small platelet likely to be a Viscott Eldridge disease. Yes, Mark. So you will all have the CBC parameters, the CBC reports with you. They have all been labeled from 1 to 21. There are 21 CBC reports. Now, some of them actually have some patient identification also in there. You could not just remove everything. So I would request that please keep these CBCs with you. Don't circulate them. You people are doing the hard work. We have done the hard work in getting this together. So don't distribute it everywhere. Keep it with yourself. And carefully, one by one, we will look at these CBCs. And then, one by one, we'll ask you to interpret. And don't hesitate to give a wrong answer. We are all learning. I'm still learning every day one new thing in CBC. So we'll go that way. Okay. Some of them may be normal, just to confuse you, and you're finding an abnormality, and it may be a normal CBC. HPLC यही आपको थोड़ी देर में मिले। आपको CBC मिल गया? खत्म हो गया? आगे आप लोगों को मैं दे दूंगा। We'll supply to anyone who is attending but could not get a hard copy of it. पीछे सबको मिल गया? PowerPoint presentation डाल देंगे. And we are also projecting it here, so you will have it here as well. Okay, so we have projected the first CBC. So, ma'am, would you like to just comment on what you find in this CBC? Yeah. So you can just read how आप देखते कैसे हो CBC को? आप क्या CBC आता है? आप normal पहले आपका mind कैसे चलता है? ये बताओ. For WBC cover, it is normal rate, it is normal. Then DLC, everything like. So I'll just share with you how I look at it. I'm sure Dr. Anupam has his own way. I have my own way. So I'll just share with you. First of all, whenever I get a CBC, I look at hemoglobin, TLC, platelet. That is how my brain algorithm has started working. I look at hemoglobin, TLC, platelet. Then hemoglobin anemia dikha, then I look at all the RBC indices. फिर white cell count के हिसाब से, then I look at all the DLC. And that is how, after looking at thousands of CBC,
whenever you give me a there are, I think it is from Thyrocare, जिनका CBC report बहुत ही उल्टा सीधा ऊपर नीचे confusing तरीके से होता है. लाल लैब का तो थोड़ा organized होता है, SRL का organized है, हर लैब का अलग स्टाइल है, उनके प्रिंटर से आता है. So I struggle with that because I have to first go up, then go middle, then go down, then go here, then go there. So it is kind of confusing for me. But usually for me that works. You can find your own way of how you look at your CBC. Sir, आप कैसे देखते हो जब आपके पास कोई CBC आता है? Exactly the same way. First thing which you have to find out from CBC is the marrow functioning all right or not? अगर आपकी दो cell lines involved हैं, इसका मतलब आपकी defect most likely is in the marrow. Yes, there are exceptions to it. So you look at the hemoglobin, you look at the TLC, look at the platelet. Let's say platelets are low, hemoglobin low. Think that this is probably into a marrow kind of disease. Then we look at, as Dr. Manas said, is look at the DLC, look at the parameters of the RBCs, look at the RDW, and I can tell you, I will tell you a very interesting thing that way back about 14, 15 years back, I had gone to AFMC Pune as a visiting. At that time, Madhuri collectors and all were there as lieutenant colonel or something. And they told me that, what should we do? I said, ward rounds. So they said, what will you do in the ward rounds? I said, I'll sit on the table here and you bring me the CBCs of the patients. And with the help of the CBC, I'll tell you a general pointer as to what disease the patient is having. And believe me, in 90% of the cases, I was correct. I gave the right indicator that this is what kind of a problem this patient would be having. So it is very, very important that we examine the CBC acutely, properly. और एक्सरे में कहते हैं ना कि आपको सॉफ्ट टिश्यू देखना है, आपने एक्सरे चेस्ट में देखना है तो बोनी एज भी देखनी है, सॉफ्ट टिश्यू भी देखना है, हार्ट सेलेक्ट भी देखना है.
Ignore. So जैसे कावासाकी हुआ, chronic lung disease हुआ, ऐसी अगर right sided abdominal mass है, तो often people think कि ये डॉक्टर ने लिख के दे दिया, ये हो सकता है this may be neuroblastoma, और तुम्हारा प्लेटलेट है 598, हमें पता है वो न्यूरोब्लास्टोमा में नहीं होगा, हेपेटोब्लास्टोमा में, because hepatoblastoma के साथ thrombocytosis associated होता है. So every small thing may have a relevance in that particular. I'm not going to make you very shakti about everything, but I'm just saying, you know, be little careful, and every single thing will have some importance, even if it is a mild importance. Okay. 4.5. 4.55 lakh is usually the normal, because in India there is so much iron deficiency. Iron deficiency में erythropoietin बढ़ता है, वो साथ में platelets को भी बढ़ा देता है, तो आपको you have lot of thrombocytosis commonly seen because our Indian population is iron deficient. 70 to 80% is iron deficient. So platelet थोड़े higher side पे common है, but that's not really normal. Okay, so this patient is either anemia or iron deficient. Yes, but has high platelet count, so it is significant. Okay, this may be a case of some connective tissue disorder, Kawasaki recovering, something like that, which is leading to that. Okay. We'll move on to second case. Ma'am, do you want to comment? Yeah, everybody has had a look most likely. So ma'am, if you want to comment on the second case, if we can get another mic, it will be good. Possible? HB less 9.5. And then we go to MCV is less, MCH is less, MCHC is less. RDW बढ़ा हुआ है, so it can be iron deficiency. So why are you saying it is iron deficiency? Because yes, MCV कितना है? 65, RDW 17.6, RBC count RBC count is normal है इस केस में, but hemoglobin कम था, 9.5 था. सर आप कमेंट करना चाहते हैं? बैठे रहो सर आप. But RDW. That's exactly what I was going to say. Man, don't forget that 70% of the Indian population by NFHS 5 is iron deficient. So 70% of the higher grade patients will also be iron deficient. Okay. Now, in this case, there are two things. One is that the RBC count is on the higher side as compared to the MCV and the hemoglobin, which shows that this is RBC is ज़्यादा produce हो रही. RDW is against a diagnosis of thalassemia, that we should rule out mixed thal trait with a mild iron deficiency in this case, and look at it more carefully and rule that out. Okay? So I would think on those lines, because आप अगर इसके 65 को divide करोगे 4.76 से, तो around 13.5 आता है, और आप अगर इसकी आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट करोगे, हो सकता है ये RBC काउंट और बढ़ जाए and your Mentzers will come down. So that is another aspect of it. PLC also had. Yes, sir. So definitely that is something. अगर आपका patient affordable है, if you want to evaluate further, commonly तो iron deficiency का diagnosis ठीक होगा, but अक्सर we want to corroborate it with doing a ferritin level, the other iron parameters, and that will tell you that there is iron deficiency. You correct the iron deficiency. Yes, yes. So thal minor के साथ iron deficiency बहुत common है, sir, and don't worry about giving iron to them. You can give iron to thal minor. You should not give iron to thal major or intermedia because they are iron overload states. But thal minor, 70-80% of your thal minor patients will have iron deficiency. So you should treat that. अगर आपके पेशेंट को फीवर नहीं है,
and I get serum test done, I do serum ferritin. Why fever? Because ferritin is acute phase. Yeah. I don't like doing too much of iron and TIBC because they are dependent upon the oral iron intake. अब हो सकता है उसने कुछ iron लिया हो, तो उस दिन रात को लिया, अगले दिन उसका iron हाई आ जाएगा, आप कहोगे ये तो गड़बड़ है, ये तो iron deficiency नहीं है. हो सकता है उसने आपको ये ना बताया हो कि उसने कोई आयुर्वेदिक च्यवनप्राश या something of that sort लिया जिसमें iron, hidden iron पड़ा हुआ है. So I think if you have to get a test done, just take the history of fever. If there's no fever, get a ferritin done. It's a much better parameter than serum iron and TIBC. अगर आपके पेशेंट ने आयरन लिया भी हुआ है तो क्या होगा, उसका सीरम आयरन हाई आ जाएगा, उनका TIBC जो है ना वो भी हाई होगा. ठीक है, TIBC is not dependent on the oral iron intake. तो ferritin लो होगा, TIBC high होगा, serum iron भी high होगा. So that shows that this is probably an iron deficiency only. Some patients, somebody has taken iron and then given the sample. So sir, usually by if your ferritin has been normalized, that means your iron deficiency is correct. Ferritin should be a marker. Usually 11-12 के ऊपर जाता नहीं है thalamic का. Although we have seen 13 वाले भी. Yes sir, if your iron parameters are normal, ferritin storage iron is normal, that means you have corrected the iron deficiency. Usually 3 to 6 months of good oral iron intake along with proper iron therapy, 6 months में पूरा iron आपका correct हो जाता है. Then if somebody is worried, somebody is concerned, you can check the ferritin. If the ferritin is okay, that means you don't need to treat that person. So we'll thank you, ma'am. But the White cell count is high. Yes, you are right. White cell, because that also should be pointed out. Because you know we get trapped into one thing, then we forget the other thing. So you are very right. The white cells are a bit high, neutrophils are a little bit high. So maybe this is a child who is infected, has some fever, and that is why a CBC was done. Because ऐसे ही तो normally CBC नहीं हुआ होगा. And the previous one I wanted to comment. Sometimes when we find the HP and platelet both high, sometimes the child is dehydrated in our what we normally see that all the 3 parameters are high in the initial phase. So usually some dehydration में your hemoglobin and hematocrit पे affect आता है. भी बड़े होते हैं. I've seen patients में PLC भी बड़ा होता है. So ma'am, that may be reactive thrombocytosis. When you have some kind of an infection, sometimes you can have a little bit of reactive, platelet response also. That also may be the case. May not be the dehydration leading to thrombocytosis. It may be the underlying hidden iron deficiency or reactive thrombocytosis, which is playing. That those are more common causes. Infection may be spleen to contract करता है iron intake and throws out thrombocytes in a big way. So that also can cause a increase in platelets initially. So we'll go to third case. Ma'am, you want to comment on the third case? Hemoglobin is very low, it's 10.7 and MCV is raised 107.2. WBCs are normal, platelet is normal. So what is your impression? Iron deficiency anemia is Mentzer Index is high. So ma'am, MCV is high ना? High है, low नहीं है. Iron deficiency में तो MCV कम हो जाएगा ना, यहाँ तो high है. So that means mean corpuscular volume high है, यानी cells बड़े-बड़े हैं. That means macrocytic anemia की तरफ जा रहे हैं हम. 107 हो गया ना, तो high है. So it's a macrocytic anemia. और फिर जब हम मैक्रोसिटिक एनीमिया में जाते हैं तो हमारे वही डीडीज आ जाते हैं मन में. बट लेट्स फर्स्ट लुक एट द रिपोर्ट बिफोर वी गो टू डीडीज. तो आपने कहा हीमोग्लोबिन 10.7 है, व्हिच इज लेस. आपने कहा डब्ल्यूबीसी ठीक है, प्लेटलेट ठीक है. फिर आपने कहा एमसीवी बढ़ा हुआ है. तो नेक्स्ट चीज जब हम एनीमिया क्लासिफाई करते हैं हम क्या देखते हैं? आरडीडब्ल्यू. तो आपका आरडीडब्ल्यू क्या है यहाँ? हाई है. सो हाई एमसीवी, हाई आरडीडब्ल्यू किसकी तरफ पॉइंट करेगा? न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ मैक्रोसिटिक एनीमिया की तरफ पॉइंट आउट करेगा. ओके, सो आपने पहले एमसीवी देखा, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक.
अब सब लोग मैक्रोसाइटिक आ गया, हाई आरडीडब्ल्यू, नॉर्मल आरडीडब्ल्यू। सो हाई आ गया तो फिर आपका न्यूट्रिशनल की तरफ ज्यादा पॉइंट आउट कर, ठीक है। अब आरबीसी काउंट क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, सब में क्या होगा आरबीसी काउंट लो होगा। तो इसका आरबीसी काउंट देखो 3.37, तो लो है। तो सारी चीजें आपके फेवर में जा रही हैं। तो अब आपका ये क्लिनिकल हिस्ट्री हमें पता नहीं, हम तो बस सीबीसी आज कर रहे हैं। तो सीबीसी के बेसिस पे अगर आपको देखा जाए, सो दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स मे बी a B12 or a folic acid deficiency leading to anemia in this case. Sir, do you want to point anything? Yeah, I think what is very important is that you should know the age of the child also. Because अगर ये बच्चा newborn है, तो ये 107 normal हो जाएगा, ठीक है? So when you have macrocytosis, please look at the age of the patient and see if it's a newborn की the same. अगर वो है तो ये normal आ जाएगा, but hemoglobin still is low. So we have to look at but the causes of anemia in the newborn are totally different from those in the infancy and in the older children. So age becomes a major factor when you are looking at the CBC. You should always ask, if somebody is asking you a question like that, ask, so what is the age of the patient? Because 107 may be absolutely normal in a newborn. So डॉक्टर पंकज हमारे साथ हैं। तो सर अगर ये न्यूबॉर्न बच्चा है और इसका कॉर्ड ब्लड वाली साइड से, बेबी की साइड से ब्लड लॉस हो गया सिग्निफिकेंट, क्लैंप डे लगा था या कुछ ऐसा हो गया, तो क्या ये पिक्चर हो सकती है आपके पास? Not immediately, but after say 48 to 72 hours. Yeah. So you can have anemia, you will have a retic response, your MCV will be high क्योंकि रेटिक्स बना रहा है और वैसे भी एमसीवी न्यूबॉर्न पीरियड में हाई है, तो एनीमिया भी हो गया, हाई एमसीवी भी हो गया, तो वही ये ब्लड लॉस की पिक्चर होगी। यस स्वाति, डीएलसी न्यूबॉर्न में क्या होता है, मोर ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसमें कितने हैं न्यूट्रोफिल? 55 First 48 hours you have न्यूट्रोफिल, बाद में लिम्फोसाइट्स आते हैं। first 48 hours हो सकता है। ठीक है, तो देखो फिर ये उस पिक्चर में जैसे सर ने पॉइंट किया ना, तो आप सोच रहे हो 12 साल की लड़की जो खाना नहीं खाती उसके लिए ये मेगालोब्लास्टिक है, और एक न्यूबॉर्न जिसका कॉर्ड क्लैम्प नहीं हुआ उसके लिए ये एप्रोप्रिएट सीबीसी होगी फॉर दैट पर्टिकुलर एज। ओके ना, मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। मैम आप वांट टू कमेंट? The hemoglobin is very less, that's 4.5, and platelets are very less, 46,000, and MCV is again increased. RDW is very much increased. WBC is within normal limits. So mainly so picture macrocytosis का है, macrocytosis and the plate liquid thrombocytopenia, pancytopenia. सो पैनसाइटोपेनिया सर आप क्यों कह रहे हैं पैनसाइटोपेनिया? WBC is 5.3 and neutrophils are 73%. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि व्हाट इज पैनसाइटोपेनिया। हम पैनसाइटोपेनिया कब कहते हैं? सर ने कहा पैनसाइटोपेनिया है, हम इसको पैनसाइटोपेनिया कह सकते हैं? All three influences. This is bicytopenia. Here you have anemia, you have thrombocytopenia, your white cells are in the range, और white cell में भी पैनसाइटोपेनिया कहने के लिए जरूरी सेल क्या है? न्यूट्रोफिल। तो आपका न्यूट्रोफिल परसेंटेज ठीक है, तो आपका बायसाइटोपेनिया। अब बायसाइटोपेनिया में मैम आगे आप क्या कहना चाहते हो, आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ बायसाइटोपेनिया? कैन यू मेक अ गेस? Then, in continuation of the pancytopenia, bicytopenia, if this patient had a PLC of 8,000 and a neutrophil of 15%,
then we would have called it as cancer. Still, yes. ठीक है? पर उसमें आपकी वाइट सेल काउंट नॉर्मल है, but the crucial one which is manufactured in the marrow में erythropoiesis, myelopoiesis, thrombopoiesis. तो आपका thrombopoiesis भी कम है, erythropoiesis भी कम है, और साथ में myelopoiesis भी कम हो गया. तो वो different situation है, but that is another possibility which can come to, which comes to us very often. तो ऑफन वो 8000 TLC देख के डॉक्टर सोचता है पैनसाइटोपेनिया नहीं है, बट वो न्यूट्रोफिल नहीं देखता. तो बैठिए मैम बैठिए. So in this particular case you have high MCV, high RDW, and the RBC count is low. You have bicytopenia. So again, this may be a nutritional anemia spectrum of disease, जिसमें आपको severe macrocytosis की तरफ आप जा रहे हो, यानी ये बीमारी कई दिनों से ट्रीट नहीं हुई. जो पिछला वाला केस था वो माइल्ड था, उसमें हीमोग्लोबिन 9 पॉइंट समथिंग था, बट ये 1 साल से बच्चा 2 साल से बच्चा नहीं खाना खा रहा, या जो भी रीजंस हैं, उसको सीलियाक डिजीज है, या उसको कोई इंटेस्टाइनल रिसेक्शन हो रखी है, या व्हाटएवर रीजन इज देयर. यू नो, आजकल हम बहुत ओबेसिटी सर्जरीज के बाद ये केसेस देख रहे हैं, बिकॉज उनको कुछ पार्ट ऑफ बॉडी अंदर का रिसेक्शन हो जाता है, B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, तो you know they are becoming thin, but their absorption is, you know, of vital nutrients is going away. So pernicious anemia, interestingly मैंने तो कभी देखा ही नहीं. I'll ask sir to say about pernicious anemia. हम इतना किताब में पढ़ते हैं. Sir, do you want to comment? Not seen, not seen enough. So इसका मतलब ये है कि most of the B12 वाले बच्चे या एडल्ट्स, हम उन्हें अगर ट्रीटमेंट दें, उनकी डाइट मॉडिफाई करें और कोई भी जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको हटा दें, तो वो बच्चे का B12 ठीक हो जाए. पर्निशियस एनीमिया आप तभी सस्पेक्ट करना अगर आपने सब कुछ कर लिया और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा. अननेसेसरी इवैल्यूएट करने की जरूरत इंडियन सिनेरियो में नहीं. ओके, सो ट्रीट दिस पेशेंट्स B12 फॉलिक एसिड. अब सर, सर रेटिक का क्या बढ़िया चीज क्या होती है कि रेटिक आपके ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को बताने में हेल्प करता है. तो आपका रेटिक कम होगा, आपने B12 खिलाया या फॉलिक एसिड खिलाया, जो भी खिलाया, तो आपका रेटिक रिस्पॉन्स आ जाएगा, विच इज एन इनडायरेक्ट कंफर्मेशन कि भाई आपका डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली सही था. बट अगर वेरी टिपिकल सिनेरियो है, वेरी टिपिकल केस है, तो कई बार हम बोन मैरो भी नहीं करते, हम सीधा, क्योंकि यू नो आइडियली बायोसाइटोपेनिया केस में आपको मैरो करना चाहिए, बिकॉज एप्लास्टिक एनीमिया में भी मैक्रोसाइटोसिस होती है, ल्यूकीमिया में भी मैक्रोसाइटोसिस हो सकती है, मगर हम हर केस में मैरो नहीं करते. सर, एनी कमेंट? Again, we should differentiate between various types of degree of macrocytosis. For example, in leukemia, aplastic anemia, macrocytosis will not be 124, 127, 28. It will be in the range of 95 to 100, 110 max. Okay. अब यही अगर आपके पास पेशेंट आ जाए 154, 154 MCV के साथ, तो हमारे को क्या सोचना है? तो हमारे को सोचना है, ये जो आंसर देगा उसका प्राइस. हाँ बिल्कुल, बताओ क्या सोचेंगे. अगर 154 MCV है तो उस बच्चे का क्या डायग्नोसिस है? प्राइस स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर गाबा. Sir, I can take that. Absolutely. Very good. Very Fantastic. Sir, देना. Because RBCs clump together in autoimmune hemolytic anemia. तो एक नहीं, 2 या 3 RBCs इकट्ठे होके 154, 150, 160 never happens in B12 folic acid. Never. Okay. So अगर आपका इतना 150 से ऊपर हो जाए तो deem it as autoimmune anemia. अब इसकी सिचुएशन में अगर इसका 150 होता तो मैं इसका Evans syndrome डायग्नोसिस रखता, क्योंकि प्लेटलेट भी लो है और आरबीसी भी लो है और MCV is 150, 160 or so. Okay.
So sir, वही अगर हमने बच्चे को एग्जामिन किया और बच्चे को बड़े बड़े लिम्फ नोड मिल गए, लिवर मिल गया, स्प्लीन मिल गया बड़ा बड़ा, तो हमें डर लग जाएगा ना कि भाई ये ल्यूकीमिया है। अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है सर, B12 डेफिशिएंसी 4 हीमोग्लोबिन तक पहुंचने मतलब वो क्रोनिक एनीमिया चल रहा है, सो दे आर काइंड ऑफ वेल कॉम्पेंसेटेड। तो हम कहते हैं चलो वी गिव यू अ ट्रायल ऑफ B12 2 हफ्ते में, देखते हैं क्या होता है, and we keep them under close follow up. We get a good lab pathologist to look at it, because that is crucial. क्योंकि अक्सर सर हमारे पास जितने बच्चे लुकीमिया के आते हैं ना, आई वुड से 80 to 90% ऑफ द केसेस में बाहर पैथोलॉजिस्ट ने ब्लास्ट नहीं लिखा होता, और जब तक वो हमारे पास आता है ना, हमारे लैब वाले उसको फटाफट बोल देते हैं कि ये तो ल्यूक है भाई, ये ल्यूक की तरफ जा रहा है। इट्स वेरी दे से एटिपिकल सेल्स, दे से लिम्फोसाइट्स, तो कॉन्फिडेंस ऑफ अ पैथोलॉजिस्ट सिटिंग इन पेरिफेरी टू से कि भाई ये तो कैंसर है, थोड़ा कम हो जाता है। सो if you have a confident pathologist who can say, oh मुझे तो hyper segmented neutrophil दिख रहा है, then I will not do a bone marrow, I'll just treat it, है ना। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंट्स ऑफ ल्यूकीमिया देखते हैं। अगर एक रन ऑफ द मिल पैथोलॉजिस्ट सिटिंग इन अ नॉर्मल लैब, even if the person knows the lot of hematology, वो जब देखेगा साल में 1 या 2 तो जरा दिल धड़कता है कि मैं ऐसा डायग्नोसिस दे रहा हूँ। बट अगर आप गंगाराम में आ रहे हो या लेबोरेटरी और रेफरल सेंटर आ रहे हो, डेली 3-3 4-4 आप क्लिनिक्स देख रहे हो, तो ऑब्वियसली यू गेट ट्यून योर आईज, योर ईयर्स, एंड यू आर नॉट स्केयर्ड, बिकॉज there is a feeling that you are in an institution and your name and the institution's name carries weight. Okay, that also makes a difference. And then there is a protection given by a bigger institution. So उससे भी फर्क पड़ता है। So I'm not saying कि भाई आपकी सिर्फ ये अच्छा है या वो बुरा है, nothing of that sort. It is your circumstances which lead you to do. So मतलब हमारे को pediatrician रेफर करता है तो he doesn't tell the patient कि इसको ल्यूक है, okay? हमारे को फोन पर बोल देगा यार ल्यूकीमिया लग रहा है, आप टैकल कर लेना, no, but he won't tell them, because the moment he tells them there can be a outburst, okay, reaction. So I don't blame them. Yeah, very true, sir. Very, very true. So I think in this case also one finding is that the MPV is high. So MPV आप देखिए थोड़ा high है. So that is just a finding, just to keep an eye on it. It may not have much of a role, but the MPV is high in this case. अगर आप करना चाहो आप B12 फॉलिक एसिड लेवल कर सकते हो, बट जैसे सर ने कहा if you are on iron, if you are on B12, अगर कोई पहले से विटामिन ले रहा है या 2-3 दिन पहले किसी और डॉक्टर को दिखाया, उसने एक विटामिन शुरू कर दिया और फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए कि सर ये बच्चा क्यों नहीं ठीक हो रहा, तब वो विटामिन टेस्ट करना बहुत यूजफुल नहीं है, क्योंकि लेवल इमीडिएटली 1-2 डोजेस के बाद ही हाई हो जाता है। ठीक है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। दिस इज केस नंबर 5। सर आप बोलना चाहेंगे? नहीं, Most of the time anisocytosis is nutritional, high RDW, but again in thalassemia major you can see anisocytosis. so this is but a simple side. If we take the RDW and we draw 2 arrows, one with high RDW, whether it is microcytic, normocytic, or macrocytic. High RDW will be seen in nutritional and hemolytic anemias. Hemolytic में इसलिए क्योंकि टूटे पटे मरे हुए आरबीसीज होते हैं, कोई कहाँ से कटा कोई कहाँ से कटा, तो उसका एनाइसोसाइटोसिस तो होना ही होना, ठीक है। The rest are all in the normal RDW. बड़ा simple, whether microcytic, normocytic or macrocytic. If RDW is high, think of nutritional and hemolytic anemia. But that is the key thing. हाँ, yeah. Unless you are thinking कि ये leukemia with DIC kind of a situation है.
(1134) vehicle number 1134. 3411, sorry 3411. हाँ जी सर बोलिए. So 8.9 है तो एनीमिया तो है ही है. तो फिर उसके बाद आप WBC देख लो, नॉर्मल है, न्यूट्रोफिल ठीक है, प्लेटलेट देख लो ठीक है. तो अब आपका माइंड ना WBC प्लेटलेट वाली बीमारियों से हट जाता है. तो आप ये सीक्वेंस यूज करो. आप MPV पहले मत देखो, आप पहले हीमोग्लोबिन देखो, WBC देखो, प्लेटलेट देखो, न्यूट्रोफिल देख लिया. अब नाउ यू नो, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द एनीमिया. अब एनीमिया में सर आपको क्या लगा, क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मोसिटिक है, न्यूट्रिशनल एनीमिया. तो सर न्यूट्रिशनल में ना यूजुअली बैठिए सर बैठिए, तो MCV कम होगा या MCV ज्यादा होगा. कभी कभी डाइमॉर्फिक होने की वजह से थोड़ा नॉर्मल साइड पे भी आ सकता है. बट इसमें एक RBC इंडेक्स का पैरामीटर है जो बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है, जो आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि ये क्या बीमारी है. तो आपको हर पैरामीटर को एक एक करके देखना है. अगर क्लासिकल आयरन डेफिशिएंसी नहीं लग रहा, क्लासिकल B12 नहीं लग रहा, अब आप आगे सोचो कि भाई क्या हो सकता है. जैसे जैसे केस बढ़ते जाएंगे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी. That's right. So very right, sir. So you picked it right. MCHC is very high here. So this is seen in hereditary spherocytosis, mean corpuscular hemoglobin concentration. मेरे को अच्छे से नहीं दिखता बट 45 है सर MCHC. नहीं मैं 45 मैं देख रहा था कि ये जो पहला ग्राफ है वो RBC का है ना. हाँ जी सर. हाँ, उसमें भी इंडिकेटर है. उसमें क्या इंडिकेटर है कि जो आपका लेफ्ट साइड की RBCs है ना वो दे आर नॉट टचिंग द बेस लाइन. आप देखो उसकी जो ग्राफ की लाइन है वो ऊपर जाके दूसरे एक्सिस को टच कर रही है. ये जो ग्राफ है ना ये वाला ग्राफ, ये सर पॉइंट आउट कर रहे हैं इस ग्राफ को. Okay, so that means that there are a lot of RBCs which are smaller than the smallest RBCs ever counted by this machine. Okay, when does that happen? That happens in fragmented RBC. Okay, so that's another indicator where the RBC graph does not touch the baseline but goes and touches the other axis, and that shows that there are a lot of fragmented RBCs. वो टूटे फूटे हैं, वो hemolysis में होते हैं, DIC में होते हैं, तो HUS में होते हैं, TTP में होते हैं. All these are seen in that situation. So that is also an indicator that there is some hemolysis going on in this patient. तो अक्सर ये होता है कि हमारी बिजी प्रैक्टिस में हमारे पास पेशेंट आया, हमने CBC देखा, उसको एनीमिया है और हमने ये थोड़े बहुत पैरामीटर्स देख लिए, हर चीज पे फोकस नहीं कर सकते. एंड द टेंडेंसी इज जनरली कि ओके एनीमिया, आयरन प्रिस्क्राइब कर देते हैं. सो आई थिंक द होल एक्सरसाइज इज मेनली कि भाई एवरीथिंग इज नॉट आयरन डेफिशिएंसी. यू नो, जब MCV लो नहीं है तो आयरन डेफिशिएंसी कहने से पहले हम 4 बार सोचे इस बच्चे का फेरिटिस कम नहीं होगा. Why? Because अगर इसको हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस है तो इसको हीमोलिटिक एनीमिया चल रहा है, इसमें आयरन लेवल ज्यादा ही होता है, बॉडी के अंदर आयरन कम नहीं होगा. ओके, सो यू नो ऐसे लगेंगे. अगर आपने ये हिस्ट्री बताई, अच्छे लैब हेमेटोलॉजिस्ट से बात करी तो वो आपको बोलेगा जी मुझे तो प्रॉपर स्पीरोसाइट्स दिख रहे हैं जिसमें कोई सेंट्रल पैलर नहीं है. और फिर आपने एक टेस्ट करा लिया रेटिक काउंट और देखो आपको डायग्नोसिस मिल गया 18% रेटिक काउंट इन अ चाइल्ड विद हाई MCHC. आपने केयरफुली एग्जामिन किया, आपको स्प्लीन मिल जाएगी. कई केसेस में फादर बोल देगा अरे मेरी भी तिल्ली बड़ी हुई थी, मदर बोल देगी मेरी स्प्लीनेक्टमी हो रखी है, या मुझे गॉल स्टोन 18 साल की उम्र पे मुझे गॉल स्टोन हो गया था. सो यू विल बी एबल टू पिक अ डायग्नोसिस ऑफ
hereditary spherocytosis. Spherocytes के बहुत सारे causes होते हैं. We'll not go into detail for that, but simple test osmotic fragility या EMA dye binding test will give you a diagnosis of hereditary spherocytosis. So importance of MCHC is highlighted by this CBC in a case of anemia. So we'll move on to next case. Diagnosis of a high MCHC. So sir, आएंगे. We'll see more interesting cases also with that very soon. I'm not sure हम HPLC कर पाएंगे because we have 21 CBC. We are at number 6. Sir, ma'am, do you want to take the next case? आप बोलना चाहोगे? Don't hesitate, just even if it's wrong. Case number 6. Hemoglobin is 10.2, which is good. WBC is 8.1, which is normal. And platelet is 9, which is good. MCV is low, MCH is low, MCH is good. And RDW is low. So सोचो आपको क्या लग रहा है? हर सेल लाइन के ऊपर कमेंट कर दो और डायग्नोसिस बन जाएगा. पहले लेट्स टॉक अबाउट, आपके पास डायग्नोसिस नहीं है बट आप डायग्नोसिस बनाओगे. आप रेड सेल लाइन पे कमेंट करो, आपको क्या लग रहा है? So this is mild anemia, माइल्ड एनीमिया. microcytic hypochromic. Am I correct? Okay. I would say that the RDW is slightly on the higher side, so probably a degree of anisocytosis, okay, and thrombocytopenia, okay, एंड आरबीसी काउंट क्या है? and RBC count is high. हाई है ना, 5.79 है. अब आपका हीमोग्लोबिन तो 10 ही है. रूल ऑफ 3 लगाओ तो नॉर्मली 13, 14, 15 टाइप तो होता हीमोग्लोबिन. तो आरबीसी काउंट ज्यादा है इन अ चाइल्ड विद माइक्रोसिटिक एनीमिया. वो और माइल्ड एनीमिया है. कॉमन क्या होता है? थैल माइनर है ना, सबसे कॉमन थैल माइनर है ना, जिसमें माइल्ड एनीमिया हो, आरबीसी काउंट ज्यादा हो. बट सर ने पॉइंट आउट किया कि थोड़ा बहुत आरडीडब्ल्यू भी ज्यादा है. तो वही हमारी पुरानी कहानी, आयरन डेफिशिएंसी तो हर थैल माइनर को हो सकती है. सो मे बी आयरन डेफिशिएंसी में थैल माइनर होगा. तो थैल माइनर तो इंडिया में 5% लोग, दिल्ली में 5% थैल माइनर है. तो आपकी क्लिनिक में हर रोज एक जना थैल माइनर तो आ ही जाएगा, आके ऐसे दिखाई जाएगा. और रिपोर्ट जब आप देख रहे हो तो इसमें और प्रॉब्लम क्या आ गई? दूसरी क्या प्रॉब्लम आ गई? प्लेटलेट की प्रॉब्लम आ गई. तो फिर वो प्लेटलेट की बीमारी क्या है, अगर आप ऐसे सीबीसी से गैस करना चाहो तो? एमपीवी कितना है? ज्यादा है ना, 7 के करीब होता है एमपीवी. तो जायंट प्लेटलेट कॉमनली किस में होते हैं? कौन सी कॉमन कंडीशन है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा और जायंट प्लेटलेट होंगे? आईटीपी. सबसे कॉमन कंडीशन आईटीपी है. तो ये हंसता खेलता बच्चा आया, इसको 2-3 इधर उधर ब्रूसेस थे, आपने एक सीबीसी टेस्ट कराया और आपने 3 बीमारियां पकड़ ली: आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया माइनर एंड मोस्ट लाइकली अ माइल्ड आईटीपी. इलाज क्या करना है? कोई इलाज नहीं करना, आयरन दे दो. थैलेसीमिया माइनर को हम ठीक नहीं कर सकते, वो तो जेनेटिक काउंसलिंग है कि भाई अगर शादी होगी एक थैलेसीमिया माइनर से तो बच्चे को मेजर हो सकता है. प्लेटलेट के लिए जब तक 20,000 से प्लेटलेट कम नहीं हो, आईटीपी को वेट एंड वॉच करते हैं, हम ट्रीट नहीं करते. तो आप ही तो डायग्नोसिस बना रहे हो. यू जस्ट हैव टू slowly look at everything and try to come to a conclusion. Okay, common. In this CBC, look at the graph, third graph. It is a graph of the platelets, if I'm not mistaken. I think second वाला platelet है और third वाला WBC है. अब इसमें भी second वाले में भी you see that the platelets, the dispersion of the platelets is plateauing out. It's not coming down. That means that there are plenty of large platelets in this, which are, making the graph a plateau rather than coming as a proper thin graph.
And IPF कर सकते हैं. If you do IPF and the IPF comes as say 20%, तो आपको और पता चल जाएगा कि ये ITP है. ठीक है ना? Why I'm pointing out the graph is because a lot of laboratories don't get IPF. अगर आपको वो ग्राफ दे देते हैं तो आप ग्राफ में देख, अगर there is a peak at 12, 13, 14 pentoliters या प्लेटो बना हुआ है, तो automatically IPF will be high because your immature platelet count is higher. The size, except for in one platelet function defect where you can have high, large platelets, which is Bernard-Solier syndrome, which is very rare. Which is very rare. उसमें giant platelets हो जाते हैं. Yes, थोड़ा सा और basic, I'm not used to interpreting the graphs. Yes sir. तो graphs के बारे में थोड़ा सा पहले base बता देंगे. Graphs के बारे में तो मैंने भी सर से ही पढ़ा. So sir is the best person to educate about the graph. मैं थोड़ा बहुत interpret कर लेता हूँ, but I think sir के comments about graph will be helpful. But I'll try to point out. जो sir कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये part, ये plateau को point out कर रहे हैं. ये जो plateauing हो रही है. अब अगर आपका large platelets है तो ये ग्राफ इस तरफ जा रहा है ना, राइट की तरफ मूव कर जाएगा. अगर आपके सिर्फ छोटे प्लेटलेट थे तो ये देखिए ग्राफ इस तरफ था. देख रहे हैं आप? अब ये वाले इसमें MPV 9 था, यहाँ प्लेटलेट इधर था. अब MPV 12 में ये ग्राफ इधर भी आ गया. दिस इज व्हाट सर इज पॉइंटिंग आउट कि वो प्लेटू हो रहा है, यानी बड़े प्लेटलेट भी, जायंट प्लेटलेट भी काफी सारे. आप समझे इस बात? number of platelets which are having the platelets. So वो जो नीचे है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम इज द स्कूल्टर की रिपोर्ट, उसमें बहुत छोटा लिखा होता है. सो जो नीचे है वो फेम्टोलीटर्स है, साइज है वो. तो जैसे जैसे उधर जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है. हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ. Let us assume that in this room there are notas like me with 80-85 kg weight, and there are 10 people like Dr. Malhotra, whom I have always envied in his and beneath, of course, on their physique. अगर हम उधर एक स्केल रखते हैं और सबका वेट लेना शुरू करें, उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें, अगर सारे 70 के होंगे तो कैसा आएगा ग्राफ? बड़ा थिन सा सीधा यूं, with very less dispersion around the mean. Okay, अगर मेरे जैसे हैं तो क्या होगा? एक डॉट इधर चला जाएगा तो प्लॉट इधर की तरफ कर जाएगा. अगर कुछ ऐसे हैं जिनका 50-60 है, वो डॉट इधर आ जाएगा मीन से, तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ चला जाएगा. So it is the dispersion. RDW is also this graph only. It is the dispersion around the mean. अब ये पॉइंट जो सर बता रहे हैं ना, बहुत अच्छे से आपको दिखाते हैं. जैसे ये केस नंबर 6 में आप MCV देखो, पेशेंट का MCV कितना है? केस नंबर 6 में MCV क्या है? 68. तो पहला ग्राफ RBC का है, आप देख रहे हो उस तरफ है, सारा उस तरफ है. अगला केस देखो, अगला केस में MCV क्या है? 88.6. ये देखो केस नंबर 8 में आप देखो, केस नंबर 8 में आप MCV देखो 123. अब देखो RBC ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया. It's totally this side, whereas the RBC graph was that side. So based on the size, you know, your curve का जगह जो है वो size के ऊपर dependent होगा. Just to give you basics, you know, we are just trying to. जब हमारे पास IPF नहीं होता था ना, आज से 10 साल पहले, हम ग्राफ से देख के डायग्नोसिस बनाते थे. कि वो अगर टेलिंग होगी, we call that as टेलिंग, की नीचे नहीं लगा और पीछे कुछ उसकी दूसरे एक्सेस में डल रही है, तो it means cystocytes are there, fragmented RBCs are there, or very small, ultra small microcytic hypochromic microcytic picture is there. So based on the graph, you can make a diagnosis without IPF. That's what I want to say. So in this patient, I hope it is clear that there is microcytic anemia, there is high RBC count, so there is Thal minor, there is little bit RDW elevated, so maybe iron deficiency का component होगा,
और साथ में the next thing that we saw was mild thrombocytopenia with high IAP. So we move on to the next case, which is case 7. So आपका case 7 में क्या है? Hemoglobin is, हाँ सर आप लेंगे? Yes. You want to say? 7. So hemoglobin is 19.8. WC is 5.9. See, normal range. MCB is 80.6 normal. CH and MCHC both are in the normal range. RTW is also in normal range, 14.9. The part is hemoglobin, which is high. Hemoglobin is very high. RBC count is high. What do you think is happening in this condition? So the diagnosis here is polycythemia. तो हो सकता है अगर ये 42-year-old very heavy smoker हो तो maybe the polycythemia is because of that. ये 30-year-old लद्दाख में रहने वाला आदमी हो तो उसके लिए भी ये नॉर्मल है. तो आपको कॉन्टेक्स्ट पे देखना पड़ेगा ना. So he may be a 5-year-old child with erythropoietin secreting tumor which is leading to polycythemia, or it may be a normal newborn. MCV बस वही एक पॉइंट है, बट बाकी सब चीज नॉर्मल न्यूबॉर्न में. टेक्नोलॉजी और फेलो का टॉक्सिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज वाला पेशेंट हो उसके अंदर पॉलीसाइथीमिया हो सकता है ना. सो सीबीसी से यू कैन मेक डिफरेंशियल. यू फिट दोस 5, देखो हमने आपको 6 या 7 डिफरेंशियल बता दिए वन केस के, एंड देन यू फिट इन विद द केस. Okay, so this is polycythemia, and yeah, as we discussed, all these differentials are possible. Okay, so we move on to next case. Sorry, number 8. RBC is low, WBC is 2.3 on the lower side, neutrophils 8.8 is on the higher side. SCT 11.9 is low, platelet 21% is on the lower side. MCV is on the higher side, 123.4. RTW is also on the higher side. तो आप पहले तो आप सेल लाइंस पे कमेंट करो इस केस पे. ऑल द 3 लाइंस. All 3 lines are involved. तो सबसे पहली चीज आप बोलोगे भाई इसके इंप्रेशन में क्या है? पैनसाइटोपेनिया प्रेजेंट. अब आप एक एक सेल लाइन को अलग तरीके से बोलो. Neutrophils are normal. सो मैम ऑलवेज रिमेंबर कि न्यूट्रोफिल परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है. Absolutely. आप यहाँ टीएलसी देखो ना. न्यूट्रोफिल परसेंटेज इज अ परसेंटेज ऑफ द टीएलसी. किसी का 1000 टीएलसी है और आपका 80% न्यूट्रोफिल है तो भी तो न्यूट्रोफिल 800 ही बना ना. एएनसी देखना है. सो आपने भी ये बोला कि न्यूट्रोफिल परसेंटेज इज हाई, बट ऑलरेडी देयर इज ल्यूकोपेनिया ना. तो न्यूट्रोफिल परसेंटेज तो वो फिर इतनी ज्यादा हाई नहीं है. अगर ये 8000 टीएलसी में 80% होता तो हम मान जाते, बट 2300 पे 80% है. 1600-1700 बनी ना EMC. वो तो है ही है. हाँ, तो बहुत हाई नहीं है, वो नॉर्मल थोड़ी सी है ना. तो यू हैव पैनसाइटोपेनिया, यू हैव मैक्रोसाइटोसिस, यू हैव हाई आरडीडब्ल्यू. तो आप जब भी चलो एनीमिया को आप सोचो तो एनीमिया में मैक्रोसाइटोसिस और हाई आरडीडब्ल्यू वाला क्या डायग्नोसिस होता है? B12 या फॉलिक एसिड. Can B12 folic acid explain the entire picture? Yes, because nutritional anemia in the severe forms can lead to pancytopenia. So this can explain the entire picture. But can it be something else also? It can be aplastic anemia. It can be leukemia. Again, all those DDs will come in your mind. But you will have to examine, clinically correlate, and if in doubt, better to do a bone marrow to root it out.
So we showed you 3 types of B12 folic acid deficiency. We showed you anemia only. We showed you bicytopenia. We showed you pancytopenia, and everything may be underlined is just a nutritional cause of anemia. We showed you iron deficiency pure. We showed you iron deficiency with Thal minor. We showed you iron deficiency with Thal minor with IT. And so the entire spectrum you are diagnosing just based on CBC. And when you don't even have a peripheral smear, ideally peripheral smear होना चाहिए, but आज की क्लास सिर्फ CBC पे है, तो हम CBC के basis पर ही ये बता, ठीक है? So we'll move on to the next because we have many to cover. Yes. So बढ़ा हुआ है. Yes. So again sir, बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्टोरी पूरी के साथ कोरिलेट नहीं करते. तो MPV बढ़ा हुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब है जब हम ITP सोच रहे हो और वो हमारे साथ कोरिलेट करे. अगर वो कोरिलेट नहीं कर रहा तो समटाइम्स वी जस्ट से कि भाई इट इज नॉट रियली कोरिलेटिंग, वी डोंट नो द क्लियर एक्सप्लेनेशन. सो कुछ जायंट प्लेटलेट्स हैं, वी डोंट नो व्हाई व्हाट इज कॉजिंग. इसमें भी ग्राफ देखो प्लेटो बना हुआ है. हाँ, इसीलिए MPV बढ़ा हुआ. So we move on to next case. Sir, would you like to comment on this case? ये बच्चा अभी भी हमारे पास एडमिटेड है. प्लेटलेट 2 लाख है, TLC 40,000, हीमोग्लोबिन 16. MCV थोड़ा ज्यादा है ना, 102 ज्यादा लग रहा है आपको, है ना? आगे चलिए. RDW हाई है, बिल्कुल. MCV हाई और RDW हाई मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशनल एनीमिया. बट हीमोग्लोबिन तो भाई 16.5 है. तो 16.5 हीमोग्लोबिन में कौन सा न्यूट्रिशनल एनीमिया? ये तो ब्लड डोनेट कर सकता है. चाइल्ड इज 5 weeks old. ऊपर एज देखो, 5 week old बेबी है ना? तो यानी कुछ तो गड़बड़ चल रही है. तो MCV ठीक ही हो गया उसके एज के लिए. ठीक है, आगे चलो जी. आगे क्या है? DLC पे आओ. That is right. इसमें क्या दिख रहा है आपको? ब्लास्ट सेल दिख रहे हैं 30%. तो अब प्राइस मिलेगा जो इस पेशेंट का डायग्नोसिस बनाएगा, उसको प्राइस देंगे डॉक्टर गाबा. हाँ जी बोलो. एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया आपका डायग्नोसिस है, बट डॉक्टर गाबा इतने आराम से नहीं देने वाले प्राइस. उन्हें बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए. 5 हफ्ते का बच्चा है. 5 हफ्ते के बच्चे को ब्लास्ट अगर आए ब्लड में तो कौन सी बीमारी में आते हैं? न्यूबॉर्न बेबी में अगर ब्लास्ट आ जाए तो वो उस न्यूबॉर्न को क्या है? So unless proven otherwise, they are usually have which syndrome, जिसमें ल्यूकीमिया हो जाता है, डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम की बीमारी में ये बच्चा अभी हमारे पास एडमिटेड है. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट एब्नॉर्मल माइलोपोइसिस. सो अक्सर कहते हैं 80-90% डाउन बच्चों को न्यूबॉर्न पीरियड में ब्लास्ट होते हैं. ज्यादातर सब बच्चों के ब्लास्ट अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं. हम CBC करते ही, बट जो सिक हो जाता है जब आप उसका CBC करते हो तो उसमें ट्रांजिएंट ल्यूकीमिया होता है जिसको कहते हैं ट्रांजिएंट एब्नॉर्मल माइलोपोइसिस. सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस CBC without even seeing the child, by the age of the child you can say that maybe this child has Down syndrome unless proven otherwise. So this is transient abnormal myelopoiesis
associated with trisomy 21. So daily we are struggling to manage this patient with Dr. Pankaj. So we thought it will be nice to put this case here. And my question, can I ask you Sir. one question? Sir. ये struggle of patient के साथ है कि पंकज के साथ है? Dr. Pankaj के साथ तो कभी कोई struggle नहीं होती. He is the most Because you easygoing can have person to difference work of with. opinion and the struggle can be there. So this child, इसके blast बढ़ गए, फिर हमने दवाई दी, कीमो दी, हल्की सी कीमो, सुंघाते हैं बस, फिर कम हो गए, फिर से बढ़ गए हैं. But usually these children, recover if we manage them अच्छे से. But अगर late हो जाए या diagnosis ना बन जाए, तो there can be a 70-80% mortality. So we are trying our best to salvage this child. They have very, very high chance कि by 2 years or 3 years they'll develop a full-blown acute myeloid leukemia later. So this is TAM, this case. So we'll move on to next case. At 5 weeks, you don't expect a hemoglobin of 16.5. So this baby actually, आपका जो किया वो sample 24 हो गया, 5 days है. 5 days. 5 days हो. You don't expect 5 Yeah, days. this is 5 days. Yeah, because we diagnosed this very early. So I didn't want to remove this to be a likha order. So this was 5-day sample. We saw this child on day 3 or day 4 of life. Interestingly, the results of leukemia with Down syndrome previously were quite dismal. But now we know that the results of acute myeloid leukemia with Down syndrome are fairly good, and you don't need that much of sort of chemotherapy, because if you give too much chemotherapy, they can fall apart. So these are sort of finer nuances with Down syndrome and acute myeloid leukemia. So we move on. और क्या हो सकता है डाउन सिंड्रोम के साथ पोस्ट ग्रेजुएट ल्यूकीमिया किस किस्म का हो सकता है? अगर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया तो किस किस्म का माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है डाउन सिंड्रोम के साथ? Something for you to read and think about. They can have both AML, they can have ALL as well. AML cure rates are better than ALL cure rates. Actually, ये उल्टा होता है, क्योंकि in general population ALL cure rates are much better than AML cure rates. But in Downs particularly, AML cure rate is very, very high. इनके अंदर एक particular mutation होती है, GATA1 mutation, which triggers this formation of leukemia. Okay. So we'll move on to next case, which is case 10. Sir, you want to say? I have a 2-year-old 3-month female child with a hemoglobin of 6.9. The white blood differential count is white blood cell count 30,000. 30,000 as a white cell count. is very high. Neutropenia is 51%, leukocyte 7%, and monocytes are 11. Absolute neutrophils counts are 15,390. They are all high. सारे absolute counts high है, क्योंकि TLC high है ना, तो most likely कोई infection हो गया होगा, जिसकी वजह से neutrophil भी बढ़ गए, monocytes भी बढ़ गए, body react कर रही है उस infection के लिए. So sepsis infection is one thing. Any other things you want to point out, sir? There is severe anemia. So anemia के ऊपर आपका क्या comment है? Max cell volume is 26.5, RBC count is on the higher side 5.1, MCHC is low 52, Mentzer Index is around 10 or 11. So sir, Mentzer हमें सिर्फ mild anemia में calculate करना है. Severe anemia में Mentzer calculate नहीं करना. तो यहाँ severe anemia है. RBC count आपने सही कहा कि काफी high है, क्योंकि इसके लिए तो RBC count 2 होना चाहिए था, 2.5 होता 6.9 के लिए. तो you are right, RBC count is very high. तो thalassemia minor एक दिमाग में कोने में चलता रहेगा, मगर thalassemia minor में severe anemia नहीं होता. तो वो उसका क्या explanation है?
MCH also very low. MCV low, RDW high. Most common diagnosis is iron deficiency anemia. तो iron deficiency anemia है, Secondary infection. infection है. सबसे कॉमन सिनेरियो, सबसे कॉमन बीमारी जो आप सब देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इन्फेक्शन, दोनों चीज है. और आपने कहा आरबीसी काउंट हाई है और इसलिए मन में कहा कि भाई थैलेसीमिया माइनर हो सकता है. ठीक है, वो सारी स्टोरी ठीक थी. अब आपने एचपीएलसी किया इस बच्चे का, क्योंकि आपने कहा जी मैं तो थैलेसीमिया माइनर पकड़ लिया, इस बच्चे का आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ है. बट जब आपने एचपीएलसी किया तो आपको HbA2 मिला 3. दैट मींस आपका डायग्नोसिस गलत हो गया. अब कैसे आप एक्सप्लेन करोगे हाई आरबीसी काउंट? फेरिटिन बहुत कम है, यानी आयरन डेफिशिएंसी है ही है. तो आयरन डेफिशिएंसी वाला डायग्नोसिस तो ठीक है आपका, फेरिटिन कम है, इन्फेक्शन आपका डायग्नोसिस ठीक है, आप उसका इलाज कर रहे हो. सवाल बस आरबीसी काउंट पे आके अटक गया. उसका क्या एक्सप्लेनेशन? That is the right answer. Absolutely. Dr. Sehgal. With iron deficiency, there can be a drop in the HbA2 levels. So ideally, what we should do is, जब ये 3-3.5 के बीच में घूम रहा होता है ना HbA2, you have to be very careful in commenting that there is no thalassemia trait. Okay, so give iron, wait for 2 to 3 months, repeat the HPLC, and your patient's HbA2 would have risen up. Another reason why I like to get this, MCV is also disproportionately low as compared to the degree of anemia. 52 is very, very, very less. So that also is a pointer towards thalassemia trait. तो आपका डायग्नोसिस थैलेसीमिया माइनर का बिल्कुल ठीक है. आपको इस बच्चे को आयरन देना है. आप आयरन देके इसका हीमोग्लोबिन बढ़ाओ. जब इसका 10-11 हीमोग्लोबिन बन जाएगा तब आप HPLC करो, आपको इसका HbA2 3.5 मिल जाए. But with the low iron, you have such a high RBC count. Sir, that is because of the thalassemia minor. So only because there is severe iron deficiency anemia, HbA2 ऊपर बढ़ नहीं पाता, क्योंकि HbA2 को भी बनने के लिए आयरन चाहिए. So if you're severely iron deficient, your HbA2 will be falsely very low. Once you treat the iron deficiency, the HbA2 will go up and you will know that there is thalassemia. They don't have a high RBC count with a low iron. True. If it is pure iron deficiency anemia, your RBC count will be low. That is why the suspicion came कि इस बेस पे कोई ना कोई गड़बड़. ठीक है? So I hope this is clear. If anybody has a question on this, please clarify. Okay? We'll go on to the next case. Yeah. We are not expecting you to make a diagnosis in this case. We are just expecting कि भाई आपका approach क्या रहेगा इस बच्चे में. What will you think when such a case comes to you? So this is an online consult for history of recurrent anemia. हमने नीचे छोटी सी हिस्ट्री दी है आपको. मदर कहती है कि कभी मुझे बहुत सफेद सा लगता है, कभी मुझे थोड़ा पीला सा लगता है, समझ में नहीं आता. मदर इज नॉट श्योर. इसको एक पहले ब्लड मिल चुका है और ये सीबीसी की पिक्चर. तो अगर आप सीबीसी देखो मैम, तो आपका क्या डायग्नोसिस बनेगा इस केस में? आपने सिर्फ सीबीसी देखा तो हाँ हाँ वेरी राइट. सो माइक्रोसिटिक है, हाइपोक्रोमिक है और आरडीडब्ल्यू क्या है? बढ़ा हुआ है.
आरबीसी काउंट क्या है? कम है। आप पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हो, आपको यही हिस्ट्री मिली है। कॉमनेस्ट क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी। तो आपका अप्रोच बिल्कुल सही है, मगर हिस्ट्री में जो ये माइल्ड बार बार येलोइश डिस्कलरेशन की कहानी है ना, उस पे हमें तवज्जो देना है। ज्यादा थिंग कि आयरन डेफिशिएंसी को ब्लड मिलना मतलब वो सीवियर आयरन डेफिशिएंसी होगी, बार बार इतना एनीमिया क्यों हो रहा है। सो बेसिकली यू विल से कि भाई ऑनलाइन कंसल्ट में नहीं काम चलेगा, अब कोविड कम हो गया है, लाके बच्चे को दिखाओ, क्योंकि ये प्योर आयरन डेफिशिएंसी नहीं। अगर आप इतना भी इस केस को देख के एक इन्फ्रेंस निकाल लो दैट दिस चाइल्ड रिक्वायर्स डिटेल्ड इवैल्यूएशन, दैट इज समथिंग गुड, है ना। फिर हमने पेरिफेरल स्मीयर कराया और पेरिफेरल स्मीयर में हमें टारगेट सेल, टीयर ड्रॉप सेल, इलेप्टोसाइट, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, फ्रेगमेंटेड सेल, पॉलीक्रोमेजिया, बहुत सारी चीजें मिल गई। तो हमें समझ में आ गया कि ये कोई ना कोई तरीके का हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है जिसमें माइक्रोसाइटोसिस है। और आप अगर नेक्स्ट पेज देखेंगे तो वो 11 केस का कंटिन्यूड है। आपने इस बच्चे को बुलाया, आपने एग्जामिन किया, आपको स्प्लीन मिल गई 3 सेंटीमीटर और आपने रेटिक कराया और रेटिक कितना मिल गया? 9.9%। और करेक्टेड रेटिक हमारी लैब कैलकुलेट करके देती है 5.7%। तो अब ये क्या बीमारी बन गई? hemolytic anemia बन गई। Okay, so this approach is important. This approach is important. Diagnosis क्या है वो बाद में बनाएंगे। अब आपको पता चल गया कि ये hemolytic anemia है, आप basic evaluation कर लो, and if you find it is difficult, you can call a hematology friend and they will help you guide to investigate this child. But it would be unfair to just keep on giving iron for 6 months, 1 year. This child we saw was under follow-up of a government setup where he's getting iron for, I don't know, 3-4 years, B12, iron, everything, but not getting better. So we looked at it for the first time and we said, ki ye to doesn't fit into a situation of a iron deficiency. Sir, aap comment karenge is case pe? So based on this evaluation, this child was evaluated and we did a HPLC. So the HPLC showed a hemoglobin parts of 14.3%, and this child had a diagnosis of alpha thalassemia. So it's not a common condition. Alpha thalassemia is rare, but it was leading. It is a common cause for microcytic anemias, which are not improving with iron and other therapy. So the very fact that iron से ये बच्चा ठीक नहीं हो रहा, microcytosis है और कोई form of hemolytic anemia है, led us to think कि भाई क्या ये alpha thalassemia तो नहीं है. And typically इनमें HbA2 बहुत कम होता है, तो इस केस में देखिए यहाँ we have pointed out HbA2 is only 0.8%. Okay, so this child had alpha thalassemia. Don't forget that in Punjab, JAK6 have a high incidence. Have a high incidence of alpha thalassemia. PGI से studies हैं जो कि कहती हैं कि 4 to 5% of the patients of hemoglobinopathies have alpha thalassemia. So that's very, very common. Then alpha thalassemia is known to occur in the eastern parts of the country also, Assam, Bengal, etc. Maybe hota hai. And more so in Thailand and all this. Yeah, we have seen many from Nepal. Yeah, Nepal. नेपाल से हमारे पास कई अल्फा थैलेसीमिया के पेशेंट्स आते हैं. So this is a Delhi-based child, and he has alpha thalassemia. Okay. Now this is again recent, 1 week back. Dr. Pankaj's patient. Okay. This child had facial palsy in somewhere in Haryana. और वहाँ based on this facial palsy, the child was diagnosed to have Bell's palsy, which is the commonest, facial palsy, which is seen. Okay.
We have given you this case scenario, case number 12. Madam, would you like to comment? तो मैंने पहले आपको फोटो दिखा दी बच्चे की. फोटो में था ये facial palsy. कल ही डिस्चार्ज किया इस बच्चे को. And this is the CBC report. मैम आप अगर इस केस को अप्रोच करो कि पहले आप हीमोग्लोबिन, टीएलसी और प्लेटलेट देख लो, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या बनेगा? बाइसाइटोपेनिया, थर्ड सेल लाइन नॉर्मल कौन सी लग रही है आपको? WBC. तो हमारी सेल कौन सा देखता है हमें WBC में? तो न्यूट्रोफिल क्या है आपने खुद ही बोला, लो है ना. तो इज इट बाइसाइटोपेनिया या इज इट पैनसाइटोपेनिया? ये चीज बहुत जरूरी है मैम. दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. प्लीज लुक एट a CBC from this angle always. You look at hemoglobin, look at platelet, look at TLC, and look at the neutrophil percentage. Then you'll know pancytopenia, bicytopenia, one cell line. So there is pancytopenia in this patient, and there is a facial palsy. Anybody would like to comment? What is the type of anemia in this patient? इस बच्चे का MCV 50 है, तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया है. सर आप 80 है, सॉरी. So a patient with normocytic normochromic anemia with neutropenia with sort of lower side of normal thrombocytes, a facial palsy, think of leukemia with CNS involvement and facial palsy. Now, this is very important that when we see a patient with facial palsy, उसका CBC जरूर देख लो, because Bell's palsy के लिए आप एक दो हफ्ते के लिए स्टीरॉइड दोगे, उसके बाद विड्रॉ करोगे, तो ठीक भी हो सकती है, हो जाए. और क्या होगा कि the leukemia will come back with a vengeance. Okay, so वैसे भी ये leukemia, CNS leukemia, so bad prognosis. ठीक है, ऊपर से आपने क्या किया, जो एक bad prognosis या even if it is good prognosis, आपने उसको convert कर दिया into a bad prognosis by giving steroids and then withdrawing them. We give steroids in leukemia, but we don't withdraw them. We follow it up, you know. So this is bad news for the child. Bell's palsy with being treated as with steroids, taking off the steroids, and the disease coming back, which we did the bone marrow, and we found that it was leukemia. So be very, very careful in this kind of situation. सर आप हमेशा मुझे नॉर्मोसिटिक एनीमिया के बारे में एक बात बोला करते थे, वो क्या बात थी सर? मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे को एनीमिया है, माइक्रोसिटिक हो, मैक्रोसिटिक हो, नो प्रॉब्लम्स, बट व्हेन इट इज नॉर्मोसिटिक, आपके एंटीने खड़े हो जाने चाहिए, जिस तरह ये बुके में एंटीने खड़े हैं. क्यों? क्योंकि all normocytic normochromic anemias are associated with systemic diseases, dreaded diseases, chronic renal failure, hypothyroidism, leukemia, aplastic anemia. All these are
normocytic, normochromic initial this thing. So be very, very careful. Even normocytic, even after anemia, chronic disease, initial is normocytic, normochromic. So you will have to investigate and find out the cause vigorously. Microcytic, no issues. Macrocytic also no issues. But normocytic में आपको जान लगानी पड़ती है to make a diagnosis. We have diagnosed chronic renal failure so many times based on normocytic anemia evaluation. बच्चा anemia के लिए आया है और जब आपने creat किया 4, nobody knew. So वही point सर बोल रहे हैं ना. Dr. Pankaj wants. This baby was treated somewhere in Bihar. So Bell's palsy, many of us are carrying some CBC around. That is the ideal thing. But Bell's palsy, the patients who are not sick. They get up in the morning and they've got a palsy. They don't get headache. They're not irritable. So this child was irritable, was beginning of morning headache, but also at Bell's palsy. The pediatrician thought it's purely Bell's palsy and needed steroids. But if we take the history properly, history itself tells you that it's not typical Bell's palsy. There's something more there. Then counts that's what. Yeah. Yeah. So lot of learning points from this case. एक तो yes, Bell's palsy को इतना lightly मत लो. Pancytopenia को miss मत करो क्योंकि neutrophil अगर कम है तो यानी को pancytopenia. Again, we will reiterate that point कि हमेशा उस चीज को देखो. Plus, whenever you're giving steroids for any undiagnosed condition, be very careful. And normocytic anemias are sinister. So, lot of learning points, sir. So, sir, you're very right. पहले तो ऐसे ही लगता है कि अगर it is an element palsy, viral infection leading to, mild thrombocytopenia, it can be peripheral neuropathy associated with, neuritis associated with a viral. But better to rule out something sinister going on. So DDs can be there. And in this case, he was treated with steroid. The girl was treated with steroid. And you can see the page number 2. You have the page number 2 of this case. By the time she came to us, when, she was referred, her platelet was 5,000. Dr. Pankaj, bhag, this is much more than just a Bell's palsy and a bruise here and there. This is a full case of leukemia. Sir. It is very important that we do a marrow in this kind of a situation. Yes, it can be viral, but the viral won't kill the child, neither will the marrow kill the child. But leukemia will certainly miss it. So, अगर आपको ये picture आ रही है with Bell's palsy, I think I would not, miss the marrow in this case. Whenever in suspicion, better to do a bone marrow test. It's, it is like something like a routine thing for us to do, and it has become safe. We sedate the child, so it is kind of comfortable for the patient. It's not as scary as it used to be. So the child doesn't even come to know about the procedure. Okay, we'll move on to the next case. Sir, do you want to comment? So this is a little longer story. This case. So in September 2021, this is again a real case. Last week we had this child with us. You all can read the story. ये बच्चा 13 नंबर, ये बच्चा कश्मीर से हमारे पास आया इस स्टोरी के साथ.
September 21 में 20 September में 26 September में Okay. and 29 January 6.5 hemoglobin is falling anemia 7.1 star gradually falling in spite of having received the transfusion also. So severe anemia is there and RBC count is also DFT is also low on the lower side 5.6, 5.9 again, and then now it has fallen to 3.2. And platelet count is on the higher side. Initially it was 5.6 lakhs, then it became 6.1 thousand, and then it fell, and then it became 6.3 lakhs. Again it has risen. Platelets are on the higher side. Almost like WBC on the lower side and RBC on the lower side. सर आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, आपने पूरी कहानी देखी, सारे सीबीसी देखे, what are you most worried about in this child? What parameter or what part of the story is the most worrisome in this patient? Very good. So the answer is neutropenia. In this child, the market, so this child was seen by many doctors in Kashmir. A very educated family, Kawasaki का diagnosis, IVIG, सब कुछ मिला, बहुत कुछ हुआ. And you know, बच्चे sick होते हैं, तो कभी-कभी diagnosis बनाना भी मुश्किल होता है. You know, we don't blame anyone. We understand the challenges. But what really helped us to make a diagnosis in this case was सारे सीबीसी, तो अभी हमने सिर्फ 3 लगाए हैं, सारे सीबीसी को लेना और उसको चार्ट में डालना और एक बार केयरफुली स्टडी करना. And everywhere the uniform thing that was glaring at us was the severe neutropenia in this child. So sir, कोई बच्चा बार-बार सिक हो रहा है, छोटा बच्चा है, 2 साल का है, बार-बार सिक हो रहा है और सारी रिपोर्ट्स पे न्यूट्रोपीनिया है. सर, how will you approach that patient? Repeated infections, patient having neutropenia, I mean, even if they don't have neutropenia, repeated infections, think of primary immunodeficiency disorder. Okay, and since this patient has neutropenia, we have to think on the lines of a neutropenia or neutrophil deficiency disorder. So, thank you, sir. तो इस बच्चे को जिसको persistent neutropenia, बार-बार oral cavity का infection हो रहा है, gum hypertrophy हो रही है, बार-बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, with severe neutropenia, we need to evaluate it. So हमने इसका bone marrow किया और bone marrow में we got maturation arrest. कोई leukemia नहीं था, aplastic anemia नहीं था. Bone marrow एक जगह पे आके रुक गई थी, काम नहीं कर रही थी. हमने सारे इन्फेक्शन सब कुछ रूल आउट कर लिए, वायरल इन्फेक्शन रूल आउट कर लिए. उसके बाद हमें लगा कि कहीं ये कोई प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी या कंजेनाइटल न्यूट्रोपीनिया सिंड्रोम तो नहीं है जिसमें बच्चों के न्यूट्रोफिल बनते ही नहीं. We gave a trial of GCSF and the neutrophils became 10,000, 20,000. So we are suspecting congenital neutropenic syndrome in this patient. We have sent a NGS for that. We have many children whom we have diagnosed this condition. They do very well with, you know, repeated GCSF administration. Personally seen 3-4 children with बार-बार एडमिट हुए, निमोनिया हो गया, गंदे इन्फेक्शंस हो गए, एंड एवरी टाइम वो बच्चा जाता है अपने इन्फेक्शन को ट्रीट कराता है. अक्सर निमोनिया इज द कॉमनेस्ट इन्फेक्शन. ठीक हो जाता है, 10 दिन एंटीबायोटिक खाए तो पेरेंट्स बोलते हैं जी ये तो हमेशा बीमारी होता रहता है, बार-बार इसको एडमिट करना पड़ता है, बार-बार एंटीबायोटिक देनी पड़ती है. तो ऐसे पेशेंट के सारे सीबीसी निकाल के उनको सबको स्टडी करो
And we have diagnosed cyclic neutropenia, we have diagnosed congenital neutropenia, and unfortunately they were all missed क्योंकि जो ट्रीटिंग फिजिशियन था वो उस समय उसने ये सोचा कि यार इन्फेक्शन है तो ट्रांजिएंटली न्यूट्रोफिल थोड़े दिन डाउन हो गया होगा और ठीक हो जाएगा। अगली बार इन्फेक्शन में वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, अगली बार इन्फेक्शन में तीसरे डॉक्टर के पास गया। When you sit with all the CBCs together, you find the story that this child never had neutrophils in his body, and that is why this child was having repeated infection. Card number 3411. Card number 3411. So, sir, cyclic neutropenia एक strange disease है। इसमें क्या होता है, बच्चा आपके पास आएगा कंप्लेंट के साथ, इसके बच्चे को बार बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बीच बीच में बीमार पड़ जाता है, और जब भी वो मुंह ओरल कैविटी प्रॉब्लम, एनल कैविटी के अराउंड इन्फेक्शंस, और जब आप सीबीसी उस समय कराओ तो न्यूट्रोपीनिया होगा, और आप 4-5 दिन के बाद कराओगे तो न्यूट्रोपीनिया चला जाएगा। So usually it comes in cycles. Every 21 days the child has neutropenia. During the period of neutropenia the child develops infection, then the infection automatically settles. So it's a kind of a genetic problem where you can have mutations in certain genes which lead to this problem. सीवियर कंजेनाइटल न्यूट्रोपीनिया में हमेशा ही कम रहते हैं, साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया में हर एक, तो अक्सर कंप्लेंट होती है कि इस बच्चे को बार बार छाले पड़ते हैं। So we document the neutrophil count at that point and make sure कि उस समय न्यूट्रोपीनिया नहीं है। To confirm the diagnosis for 6 weeks, you have to do 3 CBCs a week. That is the ideal way, ताकि आप पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट कर सको कि न्यूट्रोफिल अच्छे थे फिर नीचे गए, फिर ऊपर आ गए, फिर अच्छे थे 20 दिन फिर नीचे गए। So we have to convince the parents, and we have been able to convince those who get into repeated troubles. So can you repeat that again? कितने टाइम में कराना है? 6 हफ्ते, हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 बार। हर हफ्ते 2-3 बारी। Not only that, you should put those on a graph paper, and once you have put them on the graph paper, the time to do the marrow is not when they have dropped down to the lowest. You have to anticipate अब ये नीचे आने शुरू हो गए. At that time, if you do the marrow, you find the defect in the marrow. अगर आपने lowest में किए, वो तो तैयारी जरा बढ़ने की, तो न्यूट्रोफिल्स तो बढ़ जाएंगे इसमें, मैरो में माइलोपोइसिस उस टाइम पर बढ़िया चल रहा होगा। तो आपको हम क्या करते हैं कि उनको दे देते हैं कि ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते जाओ, और जब आप इस लेवल पर पहुंचोगे आ जाओ झटपट, and we'll do the marrow at that time. So we got a lot of cyclic neutropenias by putting these counts on a piece of a graph paper and then anticipating the next marrow के suppression का period कब होगा, उस टाइम पर marrow। Thank you, sir. So we'll move on to the next page है ना, वो उसी पर बच्चे का है, GCSF बंद करने के बाद फिर उसके न्यूट्रोफिल फिर से कश्मीर में जाके गिर गए। So we have put that child on regular GCSF till we get the genetic report. So we'll move on to next case number 14. Case number 14, gentlemen, would you like to answer? Case number 14. नहीं भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम क्या है बस वो बताओ। Granulocyte colony stimulating factor। वैसे कश्मीर के में जाके कईयों के न्यूट्रोफिल्स के जाते हैं। हाँ फटाफट आप एब्नॉर्मैलिटी बताओ, we have to finish it quickly, तो जल्दी करते हैं अब next few CBCs। हीमोग्लोबिन क्या है, कितना है? 24 हीमोग्लोबिन, वेरी वेरी हाई है ना। अब देखो तो क्या डायग्नोसिस बना आपका? हाँ हाँ, वेरी हाई हीमोग्लोबिन। ये कुछ गड़बड़ है क्योंकि आरबीसी काउंट हाई नहीं है। ओके,
So this is interference because of presence of lipids in the serum. Okay, so ये बच्चे का शुगर हाई थी, 400 शुगर थी, हाई लिपिड थी, so डायबिटीज वाली सिचुएशन में था, and because of interference Coulter was not able to read. आप देखोगे MCHC over मतलब वो मेजर ही नहीं कर पा रहा है MCHC. So this is not the correct report. उसमें लिपिड को सेपरेट किया गया, and once the lipid was separated, you repeated, then the hemoglobin was 12-13. Okay, so this is a wrong report because of high lipid and high sugar in the blood. Okay, it's a like a pseudo thrombocytopenia. ऐसे ही एक wrong है ना, आप इसकी polycythemia evaluation मत शुरू करो, आप इसको बीमारी को पकड़ो which is leading to a wrong. Okay, बच्चे को भी देखो इतना hemoglobin से बच्चा भी लाल लगेगा। हाँ, बच्चा भी लाल लगना चाहिए ना, तो clinically look at. So this was the value. HbA1c was 16 HbA1c. ठीक है? Okay. Next question. ये मुश्किल है थोड़े थोड़े, but you know, once you do it, you remember it forever. Now, MCH and MCHC. so anybody wants to take a guess what the diagnosis is in this case? तो देखो डॉक्टर ने क्या लिखा हुआ है, काइंडली रीचेक. डॉक्टर ने कहा अरे भाई ये तो गलत रिपोर्ट है, फिर से जाओ रीचेक करो. डॉक्टर साहब ने माना नहीं, कहा कि गलत रिपोर्ट है, तो 15B पे आ गए. बच्चे को रुला रुला के फिर से दूसरा सैंपल निकाला हमने. अब दूसरे सैंपल में देखो क्या हुआ. सिमिलर ही है ना रिपोर्ट. अब देखो फिर से रीचेक किया, फिर भी सिमिलर रिपोर्ट है. स्ट्राइकिंग एब्नॉर्मैलिटी क्या है इस केस में? आरबीसी काउंट लो है, आरबीसी काउंट लो है और हेमोग्लोबिन नॉर्मल, हेमोग्लोबिन नॉर्मल. स्ट्राइकिंग एब्नॉर्मैलिटी क्या है? डिस्कनेक्ट. वेरी ट्रू. डिस्कनेक्ट बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड पीसीवी. यस, पीसीवी बहुत ही कम आ रहा है. पीसीवी दोनों सिचुएशन में बहुत कम आ रहा है ना. और एमसीएचसी कितना आ रहा है देखो. एमसीएचसी कितना आ रहा है? वेरी हाई, वेरी वेरी हाई. तो ये बात सर ने शुरू में बताई थी. एक बीमारी होती है जिसके अंदर कभी कभी आपका एमसीवी बहुत हाई आ जाता है, जैसे 150 टाइप. उसमें क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाती है आरबीसी की. आरबीसी एग्लूटिनेशन हो जाती है. इन दोज आरबीसी एग्लूटिनेटेड केसेस आपका आरबीसी काउंट बिल्कुल कम हो जाएगा, जैसे इस केस में कम हो रखा है. हेमाटोक्रिट इज कैलकुलेटेड बाय आरबीसी, तो हेमाटोक्रिट भी फॉल्सली लो हो जाएगा और मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई हो जाएगी, है ना. तो इस केस में भी दोनों रिपोर्ट्स में वही था, तो रिपोर्ट गलत नहीं है, रिपोर्ट ठीक थी. व्हाट वाज हैपनिंग वाज this is what was the problem, and there was agglutination which led to very low RBC count. This was the peripheral smear picture, and that led to a wrong MCHC, wrong MCH, wrong packed cell volume. So again एक peripheral smear बना के उसको evaluate करना चाहिए to find out what the problem is. Okay, so कभी कभार ऐसी चीजें होती है जो हमें गलत रिपोर्ट दे देती है. तो ऐसे केस में क्या बीमारी होती है जिससे कोल्ड एग्लूटिनेशन होता है? कौन से इंफेक्शन से कोल्ड एग्लूटिनेशन होता है? माइकोप्लाज्मा. वेरी ट्रू. तो अगर इस बच्चे को आप एजिथ्रोमाइसिन दोगे सारी चीजें ठीक हो जाएगी. ठीक है. सो मोस्ट लाइकली एज इट माइकोप्लाज्मा ट्रिगर्स दिस. वी हैव टू डू टेस्टिंग फॉर माइकोप्लाज्मा, बट दिस कैन लीड टू दिस. ठीक है. So we'll go to 16.
Even if you are picking abnormalities and are getting sensitized to picking abnormality in the CBC, the job is done. You should be able to diagnose common conditions, and for the rare, to sensitize you to find the abnormality and then evaluate. So this is a 12-year-old child who is being evaluated for short stature. हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ये बच्चा बैठा है, इसको शॉर्ट स्टेचर है, बच्चा थोड़ा डार्क लग रहा है एज कंपेयर टू हिज पेरेंट्स, और उसके मल्टीपल सीबीसीज है. तो अगर हम ट्रेंड देखें तीनों मेन सेल लाइंस का ओवर अ पीरियड ऑफ 2017, 19, 20, हमारा ट्रेंड जा रहा है बिल्कुल सही टुवर्ड्स पैनसाइटोपेनिया. दैट इज व्हाट यू हैव टू पिक. तो अगर आप वो चार्ट में नहीं डालोगे आप ये पिक नहीं कर पाओगे. सो यू आर finding a trend of pancytopenia in a child who is being evaluated for short stature. There is another abnormality in the RBC indices. MCV क्या है? हाई है. तो जब भी ये बच्चा डॉक्टर के पास जाता है इसको B12 खिला देते. हर बार इसको B12 मिला. ये 5 साल से B12 विटामिन खा रहा है, बट इसका मैक्रोसाइटोसिस इंप्रूव नहीं हो रहा. साथ में इसको शॉर्ट स्टेचर है, साथ में इसको पैनसाइटोपेनिया. एनी गेसेस एनीबॉडी? हाइपोथायरॉइडिज्म इज वन प्रॉब्लम, बट हाइपोथायरॉइडिज्म में पैनसाइटोपेनिया नहीं होता. हाइपोथायरॉइड बच्चा, वेरी गुड पॉइंट की शॉर्ट स्टेचर में हाइपोथायरॉइडिज्म आप सोचते हो तो आपको थायराइड टेस्ट करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स वेरी ट्रीटेबल. कोई और बीमारी हो सकती है, जेनेटिक बीमारी? एक पिक्चर आई थी अजय देवगन की, where he was सरकार के पहले मेरी माँ कहती थी बड़ा गोरा था, अब काला पड़ गया. इस पेशेंट में भी ये पहले बड़ा गोरा होता था, अब काला पड़ गया. तो yes, Pancytopenia leads to short stature, leads to actually पहले उसकी शक्ल सूरत ठीक होती है, गोरा चिट्टा होता है, उसके बाद ओवर टाइम it becomes darker in color, alkaline patience हो जाती है और short stature. और usually जो आपका pancytopenia doesn't present very early. It presents after 5, 6, 7 years of age. So Pancytopenia is a very important diagnosis in this case. उसके बाद कौन सी पिक्चर थी यार अजय देवगन की? So we'll go on to next case, 17th case. I think मानस इसके बाद बंद कर. ठीक है, बाकी सब घर पे होगा क्लास. ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन कर देंगे. विल गिव द आंसर ऑनलाइन, है ना? उसमें तो है ही. चल रेसिडेंसी की तो आउटकम नेक्स्ट टाइम. सर केस 10 में मोनोसाइट्स काफी. एक मिनट ये कर ले, फिर 10 पे यहाँ मुझे एक टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी. प्लेटलेट काउंट 30,000. आई एम सॉरी, ये टाइपिंग एरर है. प्लेटलेट काउंट 30,000. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है बच्चे को ब्रूसेस हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है. 3 हफ्ते पहले उसको निमोनिया हुआ था,
8 महीने का बच्चा है। बच्चा भी खेल रहा है, बच्चा खुश है, स्माइल कर रहा है, बस उसको ब्लू स्पॉट्स आ गए तो मम्मी ले आई आपके पास। मेल चाइल्ड है। बोन मैरो सप्रेशन ड्यू टू सर TLC इसका 5100 है, न्यूट्रोफिल 40% है, वो पार्ट तो ठीक है इसका। सर हम इसका PTAPTT को क्या बहुत एब्नॉर्मल समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा एब्नॉर्मल नहीं है, 8 महीने का बच्चा है, PTAPTT बहुत एब्नॉर्मल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इस बच्चे को क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। Thrombocytopenia in a 8-month-old child. Very true. MPV low है। MPV क्या है इधर? 5. Low MPV in a child with thrombocytopenia. In a young child with thrombocytopenia. अक्सर ये बच्चे ITP का इलाज ले रहे होते हैं। What is the diagnosis? Wiskott-Aldrich syndrome. पहले तो बताया था मैंने अभी जब बिगनिंग ऑफ सेशन। इसलिए मीन प्लेटलेट वॉल्यूम एक चीज होती है, नॉर्मली जायंट प्लेटलेट जो आईटीपी में होते हैं ना उनमें बड़े प्लेटलेट होते हैं, तो एमपीवी हाई होता है। तो अगर आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पेशेंट हो विद लो एमपीवी, एमपीवी बहुत कम हो, देन यू हैव टू थिंक ऑफ Wiskott-Aldrich. And the fact that this child had a pneumonia again points towards some immunodeficiency, है ना? तो उस वजह से हो रहा है। मेल चाइल्ड है, and when you examine this patient, the child had eczema on the skin. Okay, so that completed the diagnosis. Test तो Wiskott-Aldrich का टेस्ट करें तो 20,000 लगेगा, but just by looking at 200 रुपए का CBC जिसमें MPV की वैल्यू 5 थी, you made a diagnosis of such a big disorder, and the treatment is bone marrow transplant. Okay, so I think we'll wind up here. Yeah. We've done few CBCs, and maybe the next one we can just give you the answers there. Thank you, Dr. Manas and Dr. Anupam sir. We will proceed with the certificate distribution, and for certificate distribution, I request Dr. Anupam sir to please distribute the certificates. So before then,